Techneev's testimony of science and technology empowerment of community. Today we are entering into the last session of this program. It is an initiative of Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology, Council of Scientific and Industrial Research, and Ministry of Earth Science. Good afternoon, everyone. Welcome you all to the day 25 of Techneev, Testimony of Science and Technology, Empowerment of Community. Today is the special day because it is the last session of this program. It is an initiative of Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology, Council of Scientific and Industrial Research, and Ministry of Earth Sciences to gauge the depth of penetration or impact of science, technology, and innovation in creating social equity, inclusion, and aspiration at grassroots level. It was started on 15th November 2021. Today's theme is Integrated Community Resilience. Before starting today's session, just have a quick recap of previous session held on 23rd August 22. The theme was Integrated Community Resilience. On previous day, the first technology discussed was spinning on amber charkha weaving of handloom and shearing through machine. The first technology discussed on that day was on this theme. Basically, the nomadic tribe Bakarwal and Gujar are dependent on animal husbandry for their livelihood. Dr. Tufail, Assistant Professor, PG College, Jammu and Kashmir, was the tech developer of this technology. He introduced this Ambar Charkha to this community for their income generation or increase in their income generation. Previously, they are using Gandhian Charkha for weaving and spinning of yarn, but the quality of product from that charkha was coarse, and they are getting less for that yarn. Their quality and quantity is enhanced through use of ambar charkha, and their income also increased 8 times. They got trainings from master trainer from CSIR Avika Nagar. Their products are sold in local markets and also in exhibitions. They are also assessing linkage with TriFed. TriFed is Tribal Cooperative Marketing Federation for selling their products. The second technology was establishment of rural nutri bakery for fulfilling nutritional requirement and income generation of tribal and rural communities. The tech developer and change maker for this technology is Dr. S.R. Azad, Madhya Pradesh Vigyan Sabha. He is executive president of Madhya Pradesh Vigyan Sabha. This organization basically work in the field of science and technology, and its basic functions are to transfer technology as well as livelihood generation activities for the communities. They basically working in the tribal village of Madhya Pradesh. They started their bakeries. Mainly their work is to incorporate here. Their SNT intervention done by them is that they introduce non-timber forest produce like mahua, amla and bell into bakery products. The dried flowers of mahua, which is rich in iron, and amla, that is rich in vitamin C, are introduced in the bakery products. Through SNT intervention, they replaced the nutri deficit bakery product
which only contains maida and sugar, are replaced with the non-conventional nutri-rich bakery products. And it provided a better option for their daily requirement of bakery products, as well as they also established a social entrepreneurship in their own village. Through various trainings, MPVS empowered tribal women for bakery business, and they also design some systems and bakeries for local communities, so that they can earn their livelihood from that bakery and also get the nutri-rich bakery products. It not only These products not only provide livelihood opportunities to these drivers, but also help in improving their health and nutritional aspects. The third technology established, the third technology is establishment of coastal fisheries hub in Car Nicobar Island, Port Blair. The technology implementer is Dr. Kiruba Shankar. Dr. Kiruba Shankar started this idea of starting the technology hub in that area, which is mainly dominated by traditional fisher community who depend upon marine fisheries. This island is very vulnerable to harsh weather conditions and tsunami-like conditions. This island is this island is this island Due to this location, this community is not aware of the recent advancement in information regarding fisheries very well. So there is need to infuse new ideas and novel concept into fishing practice in their fisheries practices. The main technology intervention done by Dr. Kiruba Shankar is to establish coastal fisheries hub to provide information regarding weather conditions and potential fishing zones. At least 1,000 fishermen are in their network. Here, one beneficiary and change maker of his technology, Mr. Mona Thomas, told us that earlier they are not using mechanized boat, but they are now designing fishing crafts with SMT intervention. They are also getting information regarding weather and other fishing potential zones from this hub. He also inspired his fellow community members to adopt this technology, which not only help them to save their life, but also improve their income. That's all from day 24, with the same hope that we will more such empowered communities. Let's begin our today's session of day 25. For this, I would invite my colleague, Mr. Abhinav, to take over. Thank you, Kumkumji. With this, we come to the technology one, that is Gramin Krishi Mausam Seva. We have with us Dr. Ananta Vasist, Senior Scientist, IARI. Among the change makers, we have Sri Preetham Singh, and then subsequent to it, we will interact with beneficiaries. Good morning, ma'am. Hello, good morning. I'm audible? Yeah, ma'am, you are audible. Yeah, actually, my video is not working. I'm connecting another system. Okay. In between, I can talk about this Gramin Krishi Mausam Seva. Okay. Welcome, ma'am. Yeah, of course, ma'am. Welcome, ma'am. First of all, we would like to know about this technology, that is Gramin Krishi Mausam Seva, and how farmers are benefited from it. Thank you for giving me the opportunity. My slide is visible. Hello. Yes, ma'am, it's visible. Yeah. So actually, this Gramin Krishi Mausam Seva is the project in collaboration with IMD. IMD is the funding agency, and this project run in all over the India. There are 130 MFU, agromat field unit, which are located in different ICR institute, just like one is Indian Agriculture Research Institute in New Delhi. Others are in SAU, State Agriculture Universities. 2 IITs are also included, IIT Roorkee and IIT Kharagpur.
And another in next step, this is extended to DAMU, District Agromet Field Unit. That is situated in different KBKs. And this KBKs comes under ICR again. So you can say this is a Gramin Krishi Mausam Seva is a collaborative project between IMD and ICR. So what is the importance of this Gramin Krishi Mausam Seva? As we know that in agriculture management, we require a high productivity. And for this high productivity, we include crop management, we require soil management, we require water management, we require integrated pest management, as well as livestock management. And we know that for all these management, we require a meteorological information. So there is a need of this agromet advisory service, because we know in nowadays that this agricultural production, this is depending upon many factors. They are soil, water, seed quality, but among that, weather is the major factors. And we know that weather affects on every phase of growth and development of plant, and finally the quality as well as quantity of the yield. And nowadays, because of this climate change, we all are appearing these types of situation. There is a weather variabilities, and it becomes important to have this day-to-day information to farmers so that they can make the appropriate management at the right times. And this weather forecast is also help for selecting the crop as well as different varieties for farmers. And also nowadays these extreme weather conditions are also increasing. So this is also required to manage the crop by this extreme event. Also we know that in India the rain-fed agriculture are major area is rain-fed agriculture. So the farmers are also benefited by the forecast of this rainfalls. Again, these whatever pest and disease occurs in the crops, they are depending upon the favorable weather condition as well as mainly upon temperature as well as humidity. Forewarning of crop pest and disease. This will provide the information for timing as well as level of pest infection. So these leads to the application of different plant protection input in appropriate times. So if this information goes to the farmer in right times, what will happen? They can do the management at right times, as well as they reduce the amount of these harmful chemicals as well as plant production cost. This will reduce, as well as our environment will get less polluted because of these harmful chemicals. So, ma'am, I would request you to please move the slide simultaneously. Okay. Now it is moving, sir? No, not yet. Yeah, it is moving? Not yet, ma'am. Now it's moving, sir? Yeah, now it's moving. Yeah. So keeping this in mind, this weather forecast, this will help to minimize the farm losses through proper management of agricultural operations. Keeping these in the points, this Agromet Advisory Service was started in 1994 from our division of agriculture, which is IRI. And this based upon medium range weather forecast, we are preparing this Agromet advisories on every Tuesday and as well as Friday. And then these advisory are disseminating to the farmers. And this agromet advisory prepare on the basis of this short as well as medium range weather forecast. This help to increase the agriculture production, reduce the losses, risk, as well as reduce the cost of inputs. This also improve the quality of yield, also increase the efficiency in the use of waters as well as energy, and also reduce the pollution with judicious use of agriculture chemicals. And these are, you can say, this is the operational agromet advisory services under GKMS project in different EMFU and DAMU. This is a multidisciplinary project, you can say. This first we are receiving first step is to develop the forecast, and this forecast is developed from the IMD, and
for different regions. State Met Center, they are developing the medium range weather forecast, and then this medium range forecast is disseminated to the different AMFU, which are in different ICR institute as well as state agriculture universities and DAMO, district agromet unit. These are in different KBKs, and then these are having a different expert, because just like our institute, we have an expert in pathologies, entomologies, varieties expert also. So once we receive the medium range weather forecast, using the advisory of different experts, we are preparing this agromet advisory bulletins on every Tuesday as well as Friday, and this is disseminated to the end user. Our end user is farmers, and through different modes, personal mode, through radio, through television, through SMS, through WhatsApp groups. So also through institute website, we are disseminating this advisory to the farmers in real times. So this you can say the flow diagrams. So this through this imaginary satellites and different models, ensemble models, forecast is developed by the IMD, and then this is received by us, and using the expert meet, we are preparing the advisories, and then using different mode, we are disseminating to the farmers. And time to time, we are also getting the feedback from the farmers whether this advisory is beneficial to them or not. So they are very much satisfied that these advisories are very much beneficial to them. Using these advisories, they are making different decisions in their crop management. So these advisories generally contain 3 parts, you can say. First part have a weather summary of preceding weeks, as well as normal, how much it is deviating from the normal. Then medium range weather forecast. In this, you will get the maximum temperature, minimum temperature, rainfall, wind speed, wind direction, what is the RH, maximum RH, minimum RH, cloud cover, as well as cumulative rainfall for that weeks. And also some extreme events are also for that 4 to 5 days, that is also included there. And then based upon that, crop advisory, what management farmers should do in their crops. These advisories rule is for cultivar selections, then choosing window for sowing and harvesting rotation, then irrigation settling, as well as mitigation from adverse weather event, then fertilizer application, your plant protections, your livestock management. These all are required. So these are different dissemination mode, you can say, through WhatsApp, through your SMS, through radio, television, these all India Radio, DD Kisan, voice SMS. So these are the different mode of the dissemination of this agromet advisories. Newspaper, local newspapers also there. So last year we have done, every year we are doing these types of study, whether this advisory is beneficial or not. I am showing for last year. So based upon last year advisory, 4 times, we have sent the SMS that please stop the irrigation as well as spray. So you can save the waters as well as whatever cost for your pesticide and insecticide spray that you can save. So these are the response from the farmers. They say rupees 3,000 per acre for one irrigation as well as one spray per one crops. So you can say if this advisory is applied by all farmer in all crop, how much benefit will be theirs. So again, this popularization is also very much required. So time to time, this during different Kisan Mela, farmers field visit, during different newspaper, Hindi magazines, Kisan, interaction with farmers, we are doing the advising them what is the importance of this weather forecast as well as weather-based agromet advisory in agriculture. So these are the benefits. They are using this agromet advisory, they can do the proper management in their crops. So based upon that, they can save the irrigation cost. Also pest and disease management, also they can, based upon that, they can do the different plant protection in their crops and also can save the chemicals. So reduction in number of pesticide spray, again this will increase your environmental safety, and this will also lengthen life of pesticide by precise application
which will reduce the chance of resistance development by pathogens. And also, they can increase their yield by doing proper management practices, as well as more return will be based upon low input cost and increasing the yield. And this is the one survey done by the economic impact of this agromet advisory by INCARE during 2006 as well as 2015, and they found that there is a tremendous scope of this agromet advisory to improve the income of the farmers as well as the benefit in the agriculture. So you can see, if this out of 22 principal crops, only we are applying these 4 or 5 crops, and if it will reach up to this much farmers, how much benefit will be there? Then we are taking some feedback from farmer time to time using different farmer awareness programs. So they are very much satisfied by this agromet advisory. So this based upon this, we concluding that this weather-based agromet advisory services, this helps in crop and pest management. It the farming and other agriculture related activities according to weather condition, and the gain can be either through reducing input cost or through increasing production by minimizing the losses, and this will reduce the environment pollution through the optimum use of chemicals, and also it will help in reduce resource saving. Thank you. Ma'am, we would like to know, is this initiative limited to Bulandshahr and Western UP only, or? No, actually this GKMS project is in entire India. So for us, for Indian agriculture, we are running this project NCR region. It's up to 100 kilometers. Okay. Again, in UP, there are different AMFU, in different SAU, agriculture universities. They are covering their nearby stations. So मैम बुलंदशहर और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट हम बेसिकली कह सकते हैं. हाँ जी, बुलंदशहर उसके आसपास और आपका जैसे NCR है आपका. तो मैम इसके बारे में भी क्या कोई विचार किया गया है कि इसको पैन इंडिया इम्प्लीमेंट किया जाए, या और जैसे हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी एक फार्मर्स बहुत बड़ी संख्या में है, बिहार में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं और एरियाज में भी हैं, तो इसको एक्सटेंड करने का कुछ है? सर ये ऑलरेडी जो पूरे इंडिया में है आपका, जैसे आपका पूसा बिहार है, समस्तीपुर है, वहाँ पे भी आपका एक एमएफयू है, तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ का एरिया कवर कर लेते हैं. जैसे हम लोग भारतीय अनुसंधान संस्थान है, हम जैसे दिल्ली के जितने भी विलेज हैं या 100 से 150 किलोमीटर के अंदर जितने भी आपके विलेज हैं, उनको ये एडवाइजरी दी. तो मैम उनको भी क्या ग्रामीण कृषि मौसम सेवा नाम से ही जाना जाता है? हाँ जी, प्रोजेक्ट ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है. मैम क्या आपके पास कोई एक ऐसा एस्टिमेट है जिससे ये पता चल सके कि कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, या कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? जी, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हमारे पास आपका 250 का एक व्हाट्सएप ग्रुप लगा लो, तो ऐसे आपके 7-8 व्हाट्सएप ग्रुप है. और ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो फार्मर्स है वही फार्मर्स है जिनके पास आपका व्हाट्सएप अवेलेबल है, मतलब स्मार्टफोन है. तो हम लोग उनको एडवाइजरी देते हैं, वो आगे जो है वो उनके गांव के और किसान है जिनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, उनको ये आगे डिसमिनेट कर लेते. सो ये जो भी आपके पास डेटा होगा किसानों का, वो व्हाट्सएप के थ्रू आप जो करते हैं उसके थ्रू है. बाकी और माध्यम संचार के आपने बताया जैसे कि पेपर के थ्रू या रेडियो के थ्रू भी है. तो एक जी, तो क्या इस बात इसका अध्ययन कभी आपके संस्थान ने किया है कि कितने फार्मर्स तक आप लोग पहुंच पाए हैं? इसमें आपका मोर देन 1 लाख है आपके एनसीआर इन बुलंदशहर, लेकिन मोर देन 1 लाख फार्मर्स हम लोग से जुड़े. और आपका पूरा पैन इंडिया लगाए तो इसमें करोड़ों फार्मर्स हैं. जी जी जी. मैम जैसे आपने बताया कि इसमें शॉर्ट टर्म और मीडियम वेदर फोरकास्ट की हेल्प लेते हैं आप. शॉर्ट इसमें एक्चुअली जो है आपका नाउकास्ट का भी एक आता है जी. आपका एक जैसे नाउकास्ट आपका आ गया और एक आपका मीडियम रेंज फोरकास्ट आता है. तो नाउकास्ट आपका वैलिड होता है विद इन 1 डेज या 24 आवर्स के लिए. तो जैसे नाउकास्ट हमारे पास आएगा हम तुरंत उनको व्हाट्सएप कर लेते हैं.
या SMS कर लेते हैं, या आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर है तो उसमें आपको बता देते हैं, ताकि जैसे उसमें एक्चुअली आपका एक्सट्रीम इवेंट जैसे आता है, हैवी रेनफॉल आने वाली है या ओलावृष्टि होने वाली है, या आपका फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट की जानकारी तो आप 2-3 दिन पहले भी पता कर सकते हैं, लेकिन हैवी रेनफॉल हो गया आपका, थंडर स्टॉर्म आ गया आपका, ओलावृष्टि आ गया, ये आपका 4-5 घंटे पहले ही आपको पता चलता है। तो जैसे हमें पता चलता है कि हम इनको तुरंत फार्मर्स का जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो जितना भी मिनिमम कर सकते हैं वो मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने क्रॉप में, वो उसमें कर लेते हैं। जैसे उनके हार्वेस्टेड क्रॉप है तो उसको सेफ प्लेस पे ले जा सकते हैं, या उसको कवर कर सकते हैं ताकि उनका लॉस होने से बच सकते हैं। या अगर वो ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं अपनी क्रॉप को, एक प्लेस जगह से दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, तो उसको भी बचा सकते हैं। और मैं इसी से संबंधित है कि जो मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है वो कितना दिन पहले होता है या कितना समय पहले? मीडियम रेंज फोरकास्ट जैसे अभी हमने ट्यूसडे को हमने एडवाइजरी जनरेट किया, तो अभी अगले 5 दिन के लिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन संडे। फिर फ्राइडे को हम, क्योंकि आप देखते हैं कि इंडिया में जो है वेदर काफी डायनेमिक है, तो आज जैसे हमने वेदर फोरकास्ट जनरेट किया तो वो चेंज होता रहता है, पर इतना एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स है कि आपका वो चेंज होता रहता है। तो जितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप वेदर फोरकास्ट दे रहे हैं उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर हम इस वेदर फोरकास्ट को फ्राइडे को अपडेट करते हैं आगे नेक्स्ट 5 डेज के लिए। तो ये तो अगले मैम 5 आप लोग लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट नहीं देते हैं? देते हैं, ये भी लॉन्ग एक्सटेंडेड फोरकास्ट। मैम उसका पीरियड क्या होता है, कितने दिन पहले? 10 से 15 दिन पहले आपका। तो क्या मैम आपको लगता है कि अगर इस पीरियड कुछ ज्यादा रहता, अगर हम 2 महीने या 3 महीने पहले किसानों को ये बता पाते कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा, तो रबी या खरीफ या जिसकी भी फसल वो उगाते हैं उसमें वो रियली हेल्पफुल होता, क्योंकि 10 जी, दिन ये आपका जैसे ये सीजनल फोरकास्ट में आपका आता है। जी। जैसे कि आप देखते हैं खरीफ में है, खरीफ की जो भी क्रॉप है, धान है या आपकी कपास है, ये आपकी वर्षा पे काफी डिपेंड करता है, इनको काफी पानी की जरूरत होती है। तो इसमें जो है मानसून का जो फोरकास्ट होता है वो उसको पहले दे देते हैं। जैसे अप्रैल में आपको बता देते हैं कि आगे जून से सितंबर तक फोरकास्ट कैसा रहने वाला है, बारिश ज्यादा होगी या कम होगी या कितने % डिफिसिट होगी, वो उनको पहले बता देते हैं ताकि वो फसल का चयन कर सकते हैं। अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो आप धान को ले सकते हैं, क्योंकि धान इज वाटर लविंग क्रॉप। अगर बारिश कम हो रही है, जैसे आपका 2015 में था, बारिश काफी डिफिसिट थी, तो उस समय हमने फार्मर्स को काफी अवेयरनेस प्रोग्राम दिए कि भाई आप धान मत लगाइए, क्योंकि बारिश कम आ रही है, अगर आप धान लगाएंगे तो पानी की ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, जैसे आपका पानी की है, आपके पास कैनाल है या ग्राउंड वाटर है आपका, आप उसको लगाएंगे, लेकिन आपका रिसोर्स भी तो डिफिसिट हो रहा है ना, आपका लेबर कॉस्ट भी उसमें आएगा और आपका जो आउटपुट कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका बेनिफिट कम होगा। तो आप मैम ना ये धान को छोड़ के कुछ और क्रॉप लगा सकते हैं, पल्स लगा सकते हैं, या मोटे अनाज आप लगा सकते हैं, या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा सकते हैं, कैश क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप कुछ और लगा सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम उनको एडवाइस दिया जाता है बेस्ड ऑन वेदर फोरकास्ट। मैम ये जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट है कितने एक्यूरेट होते हैं ये, क्या किसान इस पे रिलाई कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बेसिकली आपको सीजनल फोरकास्ट हम इसे कहते हैं। जैसे खरीफ में आपको कौन सी फसल लगानी है, रबी में आपको कौन सी लगानी है, इस समय बारिश का कैसा रहेगा, तो वो आप पहले उनको बता सकते हैं। मैम जो इस समय अगर बात हो तो क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं और एब्रप्ट वेदर फिनोमिनन्स की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसने खेती किसानी पे कितना असर डाला है क्लाइमेट चेंज जी, फिनोमिनन ने? जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी एक्सट्रीम इवेंट आ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा बारिश है, तो बारिश जो आपकी खरीफ में होती है, आपने कहा कि नॉर्मल बारिश है, बारिश तो आपकी नॉर्मल ही हुई है, आपके 700 mm होनी है उतनी भी है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता, इंटेंसिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। एकदम से आप देखते होंगे ना, बारिश एकदम से ऐसे आ रही है कि जैसे बाल्टियों से पानी कोई डाल रहा होगा, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर किसानों को ये पहले से पता चल जाए भाई बारिश होने वाली इस टाइम पे और इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन जो हम कहते हैं ना, पानी की सेविंग कर लेते हैं।
ये भी हम इसमें एग्रीमेंट एडवाइजरी सर्विस जो है इसमें उनको बताते हैं कि आप अपने खेत के पास एक पॉन्ड बना दीजिए और जो आप खेत में है उसमें जल निकासी का प्रबंधन कर लीजिए, ताकि जो खेत का पानी है वो आपका उस पॉन्ड में आ जाएगा। इसके कई फायदे हैं। देखो, एक तो खेत का पानी आपका पॉन्ड में आ रहा है, तो खेत की जो उर्वरकता है, फर्टिलाइजर है या उसकी जो उर्वरक है, वो भी उस पानी के साथ आपका आ गया, उसमें जो पॉन्ड है उसमें आ गया। और इस पानी को आप जब ड्राई पीरियड ज्यादा होता है, बारिश नहीं हो रही है, तो पंप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से पुनः अपने खेत में डाल सकते हैं। तो इसके एक दो फायदे हैं। एक तो पौधों को क्या होगा, फसल को जो है पानी मिल जाता है टाइम पे। दूसरा क्या है, उसको फर्टिलाइजर, क्योंकि खेत का उर्वरकता उस पानी में गई है, वो भी वापस उनको मिल जाती है। तो किसानों को फायदे हो जाते हैं इससे। और जो उनका वो भूजल से निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, वो भी उनका बच जाता है। और रिसोर्स सेविंग हम कहते हैं इसे। एक तो रिसोर्स सेविंग आपकी हो जाती है। हर खेत के बगल में एक पॉन्ड बना लिया जाए, ये भी बहुत फिजिबल प्रपोजिशन नहीं लगता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गांव वाले मिल के एक स्वर्ण सरोवर की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कि ये हर एक गांव का एक सरोवर हो, तो वैसा कुछ आइडिया डेवलप किया जाए नहीं, कि वो हर भी एक आप कर खेत के सकते बगल हैं, में एक पॉन्ड लेकिन होना मैं तो तो एडवाइस ये दूंगी खेत के पॉसिबल नहीं पास है। ही आप करें, कि ताकि वो पानी फिर से आप खेत में डाल सकते हैं। और जब आप उसको खेत में डालें तो आपको कम से कम खर्चा आएगा उसमें। आप बाल्टी बकेट के रास्ते से भी उसको खेत में डाल सकते हैं। मैम, हमारे साथ चेंज मेकर जुड़े होंगे, प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, आप हैं क्या? प्रीतम सिंह जी, मैम कुछ और बेनिफिशियरीज भी जुड़े होंगे हमारे साथ बुलंदशहर से। हेलो, प्रीतम सिंह जी बोल रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैम, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रीतम सिंह जी। जी। हाँ, प्रीतम सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। और सभी सम्मानित मंच पर जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उनको सबको नमस्कार। और सर, जैसे आपने हमारे को बोलने का मौका दिया उसके भी धन्यवाद। और इसके बारे में थोड़े से मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि मौसम विभाग से जुड़ने के बाद में हमारे को क्या फायदा हुआ और उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी हमारे साथ में। जी जी। तो सर, वैसे तो हम एनसीआर में आते हैं, दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, और ग्राम संसार और कृषि जगत सुना करते थे उस टाइम। इसमें शाम के टाइम हमारे को बताया जाता है कि मौसम का अगले दिन का हाल। लेकिन हम कभी भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1990 से लेके और 2005 तक हम कभी उसको सुनते ही नहीं थे। जी वो जी। कहते थे आज बाल रहे, तो एनसीआर का मतलब होता है इधर हमारे दिल्ली से इधर 100 किलोमीटर और रोहतक की तरफ 100 किलोमीटर। हाँ, बारिश होगी कैसे होगी, तो उसको अपने को उसके टाइम गलती मान लो या कुछ मान लो, हम सुनते ही नहीं थे उसको, ना उसको फॉलो करते थे। लेकिन जब पूसा कृषि बिला में आए और वहाँ इसकी जब जानकारी हुई, रीजन में इन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दी और उसके बाद में प्रोग्राम भी इनके चले, और व्हाट्सएप आने के अब व्हाट्सएप पर 2 साल से तो सर इतना फायदा हो रहा है कि हमारे को 2 घंटे पहले भी बता देते हैं, और वैसे इनके करीब 5 दिन पहले का वो आता है जैसे मैम ने बताया है। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो किसानों को ये है सर, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि आज मान लो जैसे धान में स्प्रे करने जा रहे हैं, यदि हमारे को मालूम पड़ जाता है कि बारिश आने वाली है, तो 1 एकड़ में कम से कम 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये की दवाई और अपनी मजदूरी का खर्चा बच जाता है। इसी तरह अपने दूसरी है
तीसरा सबसे बड़ा जो सर फायदा है इसके, कि जो खलियान के टाइम में था उसमें अब ये जो एक हफ्ते के बता देते थे, हम उसी हिसाब से उसको खलियान को इकट्ठा करके गेहूं वगैरह को तब उसकी निकासी करते हैं। नहीं पहले कई बार ऐसा होता था कि इकट्ठा करे, पूरे दोपहरी में लगे रहे, शाम को जैसे थ्रेसिंग चालू करी कि आंधी आई तो गेहूं तो रह गया, भूसा उड़ गया, भूसा रहता ही नहीं था हमारे में कई बार तो ऐसे। तो अब तो इसमें मौसम विभाग की जो सटीक जानकारी आ रही है वो बहुत ही बढ़िया आ रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी आ रही है, मंडल लेवल से भी आ रही है, और एनसीआर में तो आईआरआई का बहुत बड़ा रोल है समय समय पर ट्रेनिंग कराना। और इनके एडवाइजरी में व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे बड़ा ये फायदा है कि 5 दिन में क्या आपको फसल में करना है, क्या उर्वरक डालना है, कौन सी चीज की सोइंग करनी है, या आपका मौसम में ये गड़बड़ी है तो कौन सी दवाई का वो करना है, वो पूरा इससे अब बहुत फायदा है। लेकिन कुछ सर चैलेंज भी हैं इसमें। चैलेंज का थोड़ा सा बस यही है कि अभी ये थोड़ा सा और इसका विस्तार रूप से होना चाहिए। जैसे हम तो एनसीआर में आ रहे हैं, ग्रुपों में जुड़ रहे हैं, हमने एफपीओ बना रखा है, एफपीओ के भी ग्रुप है, उनमें जैसे वहां से हमारे ग्रुप में मैसेज आता है तो उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब उसमें किसान जो थोड़ा सा एनसीआर से बाहर का है उसको वो मौसम की जानकारी सूट नहीं कर पाती। तो आगे भी इसका थोड़ा सा विस्तार करके इस तरह से किया जाए तो किसानों को सर बहुत इसका लाभ हो सकता है। प्रीतम सिंह जी, आपको नहीं लगता कि अगर इसकी समय अवधि बढ़ा दी जाए, कि अगर जो रबी या खरीफ की आप लोग फसल लगाते हैं करते हैं उसमें अगर आपको 2 महीना पहले ही बता दिया जाए कि आगे का मौसम कैसा रहने वाला है, अगर इस साल कुछ अनियमितता है मौसम में, तो फिर ये ज्यादा कारगर साबित होगा? नहीं सर, वो तो बिल्कुल है। उसको यदि हम पहले बताए तो उससे प्लानिंग बना सकते हैं कि अब की बार यदि बारिश कम है तो धान नहीं लगाएंगे, उसके साथ में मक्का, बाजरा या और कोई ना कोई। और ये सब प्रकृति है, कई बार वो उसका पॉजिटिव की वजह नेगेटिव भी हो जाता है। अब की बार अच्छी बारिश बता रहे थे और अपने पश्चिमी यूपी या पूरी यूपी में ही बारिश अब की बार कम है, हमारे एरिया में बहुत कम बारिश है। लेकिन मौसम विभाग अपनी पूरी जैसे कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा भी है यदि उसको बताने। लेकिन एक बार बताने के बाद में बीच में भी उसके थोड़े से हमारे को ये जानकारी दे दिया कि आपको जो जानकारी दी वो तो ठीक थी, लेकिन अभी ये वापस डिले होने जा रहा है। तो उसकी भी बीच में 2 महीने की एडवाइजरी दे दी या 3 महीने पहले दे दी। तो यदि उन पर कोई सी ऐसी अपने सैटेलाइट से जानकारी होती है मौसम विभाग को तो वो भी उनको फिर वापस फॉरवर्ड कर देनी चाहिए कि इसमें भाई अब ये थोड़े से ये चेंजिंग आ गया है। प्रीतम सिंह जी, जो जहां आपकी ट्रेनिंग हुई, आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए आप गए, वहां क्या क्या सिखाया गया आपको? सर उसमें इनके फील्डों में एक तो वर्षा मापी यंत्र, उसमें हमारे को भी दिया था डेमो के तौर पे। इन्होंने हवा का डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन है, कितनी स्पीड है, उसमें ये बताया गया है। इसके मॉइस्चर का जो टेम्परेचर मीटर जमीन का कितना है तो वो भी इन्होंने। पर मेन जो फार्मर के लिए है वो बारिश पे ही ज्यादा वो करता है कि भाई बारिश वास्तव में कैसे होगी कैसी नहीं होगी। आम किसान को तो सिर्फ ये है कि आंधी तो नहीं आ रही और बारिश कब आ रही है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं इसमें? मेरे पे सर 11 व्हाट्सएप ग्रुप है। 11 व्हाट्सएप ग्रुप से? हाँ, मेरे खुद के 11 ऐसे हैं, कम से कम उसमें एक में 110 हैं, बाकी 200, 250, 250 तक के उसमें वो। हर एक ग्रुप में? तो पूरे हाँ, क्षेत्र के कितने किसान जुड़े हुए हैं आपसे? क्षेत्र में तो सर मेरे करीब करीब बुलंदशहर के तो प्रत्येक गांव में से 5-5, 10-10 सब में से जोड़ रखे हैं। और आय के अगर संदर्भ में बात करें तो कितना आय में कितनी बचत या कितना इजाफा हो जाता है इसके कारण से? जी सर, आय में आपको थोड़ा सा देखो, मैं तो थोड़ा सा एक्टिव हूँ, उस आधार पे बता सकता हूँ। कुछ मेरे ग्रुप में काफी एक्टिव हैं फार्मर। आम आदमी तो इसका लेखा जोखा नहीं रखता, पर यदि अब जैसे जानकारी हुई है तो इससे पर एकड़ पे आराम से 2000 से 2500 पर छमाई के हम बचा लेते हैं, पानी से, दवाई से।
इस तरह की जो चीजें उनसे हमारे को बचत हो जाती है। अच्छा, तो क्या इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे कुछ महिला किसान भी जुड़ी हुई हैं? हाँ, ये तो सब जब वो अपने फार्मर ग्रुप है नहीं, उसमें महिला भी हैं और हर जाति के भी हैं, छोटा भी किसान है, बड़ा भी किसान है, हर तरह का है। जो एफपीओ फॉर्मेट है ना, तो उसमें तो सबका समावेश है उसके अंदर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम सिंह जी। और इसके साथ हम बेनिफिशियरीज से जुड़ना चाहेंगे। जगीर सिंह जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सब, अभी आप सबको नमस्कार। जगीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे लाभदायक रहा आपसे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा से जुड़ना आपके लिए? तो ये बड़ा लाभकारी है हमारे लिए, तो क्योंकि इसमें पानी की हमें दिशा और दशा सुधारने का भी मौका मिलता है, क्योंकि पानी हम ज्यादा नहीं निकाल पाते, जमीन से दोहन भी नहीं कर पाते हैं और वर्षा का इंतजार करते हैं। वर्षा होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कोई हमारा क्रॉप पड़ी हुई है, फसल पड़ी हुई है, अब देखो हमारा बाजरे का खेत में बाजरा पड़ा हुआ है कटा हुआ, तो उसमें हमने पन्नी का और पल्लियों का यानी उसको ढकने की व्यवस्था की हुई है। तो अगर आज की एडवाइजरी है कि जैसे 29 तारीख को मौसम खराब होगा, तो हमने पूरी व्यवस्था उसकी करके रख रखी है अपने पास कि जैसे ही वर्षा आएगी हम उसको ढक देंगे, तो हमारी फसल खराब होने से बच जाएगी। और कोई स्प्रे वगैरह करना है खेत में तो हमारा स्प्रे बच जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं गेंदे की भी फसल लगाई हुई है फिलहाल में, आज मैं स्प्रे करना था, मैंने स्प्रे भी बंद कर दिया है कि मैं भाई आज वर्षा का मौसम है, आज नहीं लगाएंगे। वर्षा हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन हमें सावधानी के लिए एडवाइजरी मिली हुई है। और डॉक्टर साहब, तो इसके गेंदे लिए की फसल हमको को क्या वर्षा से नुकसान होता है? नहीं, नुकसान नहीं। अब अगर हम जो लगाएं उसमें दवा लगाते हैं हम, आज जैसे उसको ग्रोथ के लिए लगाएं या कीड़े की लगाएं तो वो धुल जाती दवा, दवा धुल जाएगी तो फिर नुकसान होगा उसमें, क्योंकि हमारी तो दवा धुल गई, जिस कारण के लिए लगाई थी वो कारण सिद्ध नहीं हुआ, तो इसलिए ये दवा भी नहीं लगाते, इससे भी बचत आती है हमको। दूसरा, जैसे पानी है, पानी का भूमि का दोहन रुक जाता है। भाई हमारे को मालूम पड़ गया 29 तारीख को आज बरसात होनी है, तो हम क्यों अपनी ट्यूबवेल को चलाएंगे या बोरिंग को चलाएंगे? उसमें जो हमारा इंजन है या बिजली है, ट्यूबवेल है, उसका मेंटेनेंस टूट फाट का भी बचता है और जमीन का पानी का जो दोहन रुक जाता है, तो इसलिए हम उसको भी नहीं चला पाते और बहुत बढ़िया से रहते हैं। इसको और बढ़िया किया जाए, उत्तम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको और अच्छी ग्रोथ दी जाए, जिससे कि और आगामी हमें लाभ मिल सके। और कैसे इसको, और आप क्या इससे, आपकी क्या उम्मीदें हैं और कैसे इसको बढ़िया बनाया जा सकता है? आप अपने कभी हिसाब से क्या सोचते हैं? कभी कभी डॉक्टर साहब ये फेल हो जाता है। कभी कभी जो जैसे इन्होंने एडवाइजरी दी, एडवाइजरी पर मौसम नहीं आता, बगैर एडवाइजरी के कभी कभी मौसम आ जाता है। और ये कभी ये 5 दिन की जगह हम तो कहते हैं कि करीब ये 8 दिन का हो या 15 दिन का तो कम से कम हो, कि जिससे कि 8 दिन में या 15 दिन में और भी बढ़िया रिजल्ट इसके आ सके। बिल्कुल, आपकी बात ध्यान में रखी जाएगी। और मुझे लगता है और किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी श्री अरविंद कुमार, श्री महावीर सिंह जी, महावीर सिंह जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? श्री अरविंद सिंह जी, और कोई किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ? मुझे लगता है श्री जगीर सिंह जी ही हैं। जी सर, जी सर। जी जी जी। तो मैं अनंता मैम से पूछना चाहूंगा। मैम, हाँ जी मैम। मैम, जैसा कि जगीर सिंह सर कह रहे थे कि ये 5 कभी कभी फेल हो जाता है फोरकास्ट, और 5 से बढ़ा के दिन अगर कर दिया जाए तो ये ज्यादा लाभकारी होगा। तो क्या ऐसा करना संभव है, ऐसा कर पाना? जी, जैसे कि किसान के व्यू पॉइंट से तो ये अच्छा है कि जितना लंबा आपको फोरकास्ट मिलेगा
उनके लिए अच्छा है कि मैनेजमेंट करने के लिए टाइम मिले। लेकिन जो इंडिया की कंडीशन है, इसको कहते हैं कि ट्रॉपिकल, मतलब यहाँ पे आपका फोरकास्ट जो विशेषकर आपका जो अभी गर्मी का सीजन होता है, मानसून का, इसका प्रिडिक्शन करना लंबे समय के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होती है। विंटर में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। विंटर में आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरे किसान साथियों ने भी देखा होगा कि उस समय अगर बारिश की हम फोरकास्ट देते हैं तो 100% बारिश होती है, क्योंकि उस समय आपका जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होता है वो उतना डायनेमिक नहीं होता। अभी जो मानसून का सीजन है, इसमें आप जितना लंबे पीरियड के लिए फोरकास्ट दोगे उसकी एक्यूरेसी उतनी कम हो जाती है। तो ठीक है, हम लोग एक्सटेंडेड फोरकास्ट भी देते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी आपकी कम हो जाती है। तो इसके लिए आपका जो है नाउ कास्ट हम जो कहते हैं, एक दिन पहले, उसकी एक्यूरेसी आपकी 99% तक आपकी एक्यूरेट है। तो जो अभी तक फोरकास्ट दी जाती है, एक तो आपकी सीजनल फोरकास्ट जाती है, सीजन मतलब पूरा सीजन के लिए, अभी खरीफ में बारिश कितनी होने वाली है, सामान्य रहेगी या सामान्य से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, तो उसके हिसाब से किसान भाई बहन अपना जो है क्रॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, हमको इस समय ज्यादा जो एरिया है वो धान के लिए देना है या किसी और अन्य क्रॉप के लिए देना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, आप जैसे कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड रेंज 10 से 15 दिन का दे दिया, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन ठीक है, वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तीसरा आपका जो है होता है मीडियम रेंज फोरकास्ट, 5 दिन का हम जो देते हैं, ये भी आपका काफी हद तक ये एक्यूरेट जाता है। लेकिन जो मानसून पीरियड है, इसमें विशेषकर मैं अपने किसान साथियों के लिए कहूंगी कि जो नाउ कास्ट होता है उस पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपका 99% या 100% एक्यूरेट। जी जी मैम, जैसा कि प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि आप 10 से 15 दिन वाला फोरकास्ट या 8 दिन वाला फोरकास्ट कर दीजिए, और फिर अगर उसको आपको लगता है कि 1-2 दिन में वो चेंज होने वाला है पैटर्न, तो फिर आप उसमें एक अलर्ट जारी कर दीजिए या फिर एक नया फोरकास्ट कर दीजिए। तो क्या ये संभव नहीं है? ये संभव है जी, संभव है। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट हमारा जाता है, लेकिन अभी हम इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल पे ही रख रहे हैं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं जा रही, तो उसको ओनली एक्सपेरिमेंटल बेस पे रखा है अभी, तो इसको ज्यादा आगे डिसिमिनेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो मैम, ये आगे डिसिमिनेट पर्पस के लिए हमने मीडियम रेंज फोरकास्ट ही रखा है, जो अगले 5 दिन के लिए। अच्छा मैम, ये ग्रामीण कृषि मौसम सेवा अपनी सेवाएं कब से दे रहा है? ये जो हमारा IRI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 94 से देता है, 94 से हमने स्टार्ट किया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ मैं डॉक्टर सीरत को बुलाता हूँ सेकंड टेक्नोलॉजी के लिए, जो है इम्पैक्ट ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स कल्टीवेशन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार फॉर अपलिफ्टिंग द ट्राइबल फार्मर्स। सीरत। Good afternoon. Am I audible? Hello. Good afternoon, everyone. Welcome to the final session of Techneev. The second technology that we are discussing today is impact of aromatic crops cultivation in aspirational district Nandurbar for uplifting the tribal farmers' income. The technology developer is Shri Ashwin Deepak Nanavare, Senior Scientist, CSIR CIMAP, and the beneficiaries are the tribal farmers from the district Nandurbar. Ashwin ji, आप हैं? Ashwin sir? Sir? Hello, am I audible? Hello. Yes, sir, you are. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Welcome, sir. Could you tell us? Yeah. Could you tell us something Can I about the start? technology? Yeah, Sir, sure. May I have can the you permission? can you adjust your camera a little? You're not visible. Yeah. A little more, sir. Okay, fine. Can I have the permission to start? Yes, sir, you can. You are still not visible, sir. That's fine, ma'am. We will have the interaction. Okay, sir. Please Okay, ma'am. continue. Yes, sir. Yeah, respected committee members, a very good afternoon to all of you.
In the first place, I would like to thank the committee member for such a nice introduction. Myself, Ashwini Nannavre. I'm a chemical engineer and currently working as principal scientist in CSIR Central Institute of Medicine and Aromatic Plants, Lucknow. Today, I'm here to present a glimpse of the work carried out for the upliftment of tribal farmers' income in aspirational district of Maharashtra, that is Nandurbar. This project is supported by DBT, and the implementing organizations are CSIR CMAP, BIF, and PDKV Akola. Now, as we all know, that in India, the cultivation and processing of high-value aromatic crop for the production of essential oil is an employment-generating activity which has empowered the rural India with increase in income generation. Now, in Maharashtra, aspirational district Nandurbar is mainly known for its drought-affected condition and the tribal farmers' migration cases. In addition, the the unpredictable rainfall condition and the unavailability of water may lead to the failure in earning profit from the agriculture practices, leads to farmer suicidal cases. Now, in order to address serious issues and to uplift the tribal farmers' income, uh, cultivation and processing of this aromatic crop for the essential oil production is an employment generating activity. Now, knowing the demand and supply of the essential oil in India as well as in abroad, we have which is means continuously increasing from 2015 till date. We have introduced different improved varieties of aromatic crop in this aspirational district of Nandurbar, like the geranium, lemongrass, palmarosa, tulsi, etc. to the various farmer in that clusters. And within a period, this project is implemented within in the month of from has been implemented from the month of March, and within a period of 6 months, in collaboration with Bayer, more than 100 hectares of land is under aromatic cultivation, and more than 50 farmers family are getting benefited from the cultivation and processing of aromatic crop and through the selling of essential oil. All these variety have been means all these means lemongrass, citronella, palmarosa, geranium, and tulsi. They have been accepted widely by the Nandurbar farmer and are established in different farmer clusters. And farmers are getting very good returns from this palmarosa and lemongrass field. Uh, this aromatic crop preservation is really helping the farmers of tribal region, that is Nandurbar, and it is also helping in minimizing the migration of these farmers. Now, in this session, some of our farmers are also connected, and some of the farmer representative are connected, and they will share their personal experience about the aromatic crop cultivation and and how it has helped them to improve their livelihood status. So, our main aim in this project is to uplift the tribal farmers' income through the cultivation and processing of aromatic crop and make the aspirational district Nandurbar a hub for the production of essential oil. I would like to call some of the farmers. They are already in that loop to share their experience. Sure, sir. It's up to you. Can you call can you call Devendra ji? He is the main nodal person for Devendra ji and Leela ji. They are coordinating from BIF at Nandurbar region. Devendra ji, he has joined, I think. Devendra ji, can you hear us? हाँ मैम नमस्ते Namaste, sir. मैडम हमारे यहाँ अभी हम जो ट्राइबल ब्लॉक है हमारे इधर अक्कलकुआ और गढ़गांव, तो यहाँ पे हमने अक्कलकुआ ब्लॉक में कई सालों से पाल्मारोसा जो नेटिव वैरायटी थी वो लगा रहे थे फार्मर्स, लेकिन उसका ऑयल परसेंटेज बहुत कम निकलता था। तो हम डीबीटी थ्रू और सीमैट के थ्रू हमने वहाँ पे अभी नया वैरायटी पाल्मारोसा का हो या लेमन ग्रास हो, उसमें जीरेनियम हो और तुलसी, ये हम नया वैरायटी वहाँ पे लगा रहे हैं अभी। और उसका पिछले साल हमने कन्वर्जन के थ्रू इस मैप से रोसा का ग्रास सीड मंगाया था, तो उसके ऑयल परसेंटेज में 40 से 50% इंक्रीजिंग हुआ है। तो वो भी फार्मर्स के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने लग गए अभी। और इस साल हम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब फार्मर स्केलिंग करते जा रहे हैं। तो अभी फार्मर की यील्ड भी बढ़ रही है और माइग्रेशन का भी हम
बहुत माइग्रेशन इधर गुजरात और एमपी नजदीक होने के कारण से शुगर केन का एरिया नजदीक होने के कारण से माइग्रेट ट्राइबल्स होते हैं, वो भी हमको कंट्रोल करना है। तो इस माध्यम से हम कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स एरिया में, और फॉरेस्ट एरिया होने के साथ साथ वहाँ पे कल्टीवेशन भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी अनकवर्ड लैंड बहुत बढ़ती जा रही, तो वहाँ पे हम ग्रासेस का भी ज्यादा से ज्यादा तो यील्ड ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। हेलो जी सर, आप लोग इससे पहले क्या करते थे? आप कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे? वहाँ पे मैम मेज और सोरगम ही होता है, और कुछ मिलेट होते हैं। तो हम वहाँ पे नेटिव उसमें भी काम हमारा चल रहा है, चल रहा है और सोरगम में भी चल रहा है। उसके साथ साथ हम इनपुट में भी चलते जा रहे हैं। एक से एकदम हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फार्मर्स की लोकेलिटी होती है कि वो नया नया वैरायटी लगाने को ये नहीं करते, ज्यादा से प्रेफर नहीं करते। तो हम थोड़े थोड़े हम चेंजेस कर रहे हैं, हम चेंजेस करते जा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे लेकिन इम्प्रूव ला रहे हैं। तो ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं अभी, और इससे मतलब लोगों की लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव आए हैं? लाइफस्टाइल में तो बदलाव, कनेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग वहाँ उनके साथ साथ जैसे हम इंटरेक्शन बढ़ रहा है, टेक्निक्स उनको जा रही। अभी ऑयल का डिस्टिलेशन यूनिट मिला, उसका प्रोसेसिंग होना चालू हुआ, उसका कुछ प्रोसेसिंग के लिए लेबर वहाँ पे लगे, मतलब लेबर डेज भी जनरेट हो रहे हैं। लोगों को ग्रास से भी जो नेटिव है वो तो हम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में खरीदी कर रहा है, लेकिन जो इम्प्रूव है वो भी खरीदी कर रहा है। तो दोनों मिला के अच्छे तरीके से लोगों को इनकम भी बढ़ रही है। इनकम कितना बढ़ता होगा अभी, कितना मिलता होगा एवरेज? पहले 1 टन में से रोशा गवर देखा जाए मैम तो 2.5 से 3 लीटर निकलता था, लेकिन अभी इम्प्रूव वेराइटी हम कन्वर्जन के थ्रू पिछले साल लगाया था, तो 4 से 4.5 लीटर तक मिल रहा है। तो इस साल और हमने और इम्प्रूव वैरायटी मंगाई है, तो इस साल भी अच्छे तरह से मिलेगा। तो आप लोग ये सिर्फ एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं और भी कुछ प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूस करते हैं? इसेंशियल ऑयल में ही हम, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल हीलर्स बहुत है मैडम, तो वहाँ पे अभी तो कोरोना के सीजन में हमारे पास इतना जितना ऑयल प्रोड्यूस किया था वो पूरा हमने इधर उधर से कलेक्ट करके वहाँ पे बेचा, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो 2500 से 3000 तक की रेट आते हैं, लेकिन छोटी छोटी बॉटल में 50-50 ml और 200 ml की बॉटल बेचते हम तो 5000 तक मिल जाता है, इनकम मिल जाता है। तो इसका सेल सिर्फ लोकल मार्केट में है या अब बाहर भी डिमांड है? एक कोऑपरेटिव बनाई है मैडम, 1200 फार्मर्स की है, बायर ने इनिशिएटिव लिया था, तो 1200 फार्मर्स भी उसमें आते हैं, और वो कोऑपरेटिव या सेलिंग का काम, मार्केटिंग का काम करती है। और इसकी प्राइसिंग कितनी होती है, मतलब कैसे आप बेचते हैं इसको? 50 ml के मैडम तो हम 100 रुपए लेते हैं। और ऑनलाइन सेल करते हैं आप? नहीं मैम, वहाँ पे इतना अभी लोकल में हो जाता है। और कोई लोग हैं आपके साथ जो शेयर करना चाहेंगे? ये ट्राइबल आके नमस्ते मैम, नमस्ते। मालेवा सलों में गाँव पड़ा, फिर वहाँ पे रोसा होता है, तो उनको किसान के साथ वो रोशा गौत का भी अगले महीने वो निकलने वाला है, वो थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आवाज थोड़ी कम आ रही है। अभी रोशा का वक्त अगले महीने कटेगा, तो किसान के साथ बात करके
ज्यादा ज्यादा कैसे कोऑपरेटिव को जो है किसान की कोऑपरेटिव वहाँ ज्यादा करके कितना ये हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेगा, उस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो अभी बारिश भी अच्छी हुई है तो वो रोसा ग्रोथ भी अच्छा है, तो उस पे अभी अगले महीने ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे। मैडम रोशा गवत मीन्स पामारोजा। ओके, थैंक यू सर। तो इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? सिर्फ मेडिसिन में है या और किस किस चीजों में यूज होते हैं एसेंशियल ऑयल्स? ये तो एक दमा के लिए होता है मैम, दमा के लिए, सर्दी खोखली के लिए, और मालिश के लिए भी करते हैं, और पैरालिसिस जो है उसको भी करते हैं, और जिसे हमेशा वो खांसी और ऐसी आती है तो पूरा चाय इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक टी इस्तेमाल someone has their mic on, please turn it off. तो इसके ये जो कल्टीवेशन होती है साल में एक बार होती है या कैसा होता है? जड़ पे तो कोई इसी पे है ही ना, कर रहा सब डिस्टर्बेंस आ देना। Yes, please. जगवीर जी, please turn off your mic. जी 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 मैम। Please turn जी, आपका माइक ऑन है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। जी जी बेसिकली मैम जो नेटिव स्पीसीज यहाँ बहुत सालों से लगाई जा रही है किसानों द्वारा, तो मोस्टली उसमें तो एक ही बार उसका हार्वेस्टिंग होता है, लेकिन अभी जो हमने इम्प्रूव जितनी वैरायटीज दी है सीमैप और डीबीटी के अंदर, तो इनकी साल भर में 3 से 4 कटिंग हो जाती है। और नेटिव प्रोसेस में जो अमरोजा होता है उसमें कोई डाली नहीं जाती, लैंड पे कम्युनिटी लैंड पे ही वो लोग लगाते हैं। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं थ्रू द सीमैप, इसमें थोड़ा सा हम प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी होता है, इससे साल भर में कम से कम 3 कटिंग्स तो हमें मिल ही जाती है। तो इसमें पानी की खपत जो होती है वो नॉर्मल क्रॉप से कम होती है या कैसे रहता है? यस यस यस, पानी बहुत कम लगता है अदर। तो जितने प्लांट्स आप ग्रो करते सबके लिए ये ट्रू है? यस यस यस। और पहली बात लेमन ग्रास हो गया, वेटिवर हो गया, उसके बाद में तुलसी हो गई, तो एक बहुत कम पहले लगाते थे और मोस्टली पामारोजा ही ज्यादा कल्टीवेशन के अंदर रहता था, लेकिन ये सारी स्पीसीज भी हमने अभी इंट्रोड्यूस की है और किसान अभी इनिशिएट ले रहे हैं इसके लिए, और विलेज लेवल पे अच्छा अवेयरनेस भी क्रिएट हो रहा है। तो आपके पास कोई ये प्रोडक्ट की इमेज होगी या आपके मतलब मशीनरी कुछ आप दिखा सकते हैं जो आप यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए? मैडम वहाँ पे अभी रेंज नहीं है, हमने सब टीम को यहाँ पे बुलाया है। Madam, I will share. I had shared that detail with the consensus. Yes, sir. There were photographs over there, but I was trying to like everyone could see it here. Photograph as well as video. Okay. So, can you show the video right now? Yeah. I will share. Just. Okay, sir. Okay. नाही तर निलेश जी कालचा जो व्हिडिओ तुम्ही पाठवला होता ना तो शेअर करताय का? मोबाईल मध्ये हा मोबाईल वर हा मेल लगा मोबाइल करा।
अश्विन सर, हा बोला. ते होतंय तोपर्यंत काही फोटोग्राफ दाखवू तुम्हाला? चालेल ना, चालेल. मोस्ट प्लीज. ओके ओके. And some photos they are displaying. Meanwhile, that video is getting uploaded, is Yes. getting shared. आपले जे अवेअरनेस प्रोग्राम आपण कंडक्ट केले होते किंवा फील्डचे फोटोज होतील ना, आप शुरू में क्या कर रहे हैं? निलेश जी याला प्रेझेंटेशन मोड मध्ये टाकून द्या F5. येस येस सर, टाकलं. हा दिसत आहे. फोटोज दाखवून द्या. हो त्याच्यात फोटोज नाही आहे ना. हो हो, पुढच्या स्लाइडला. अच्छा. Madam, hello. Yes sir. Yes sir. Ma'am, these are the videos actually. These are the you were asking about the video. Okay sir. Lily ji, the photos दाखवून द्या. Back मागे. हा. These are this slide. Here राहू द्या. Ma'am, from this slide you can see the nursery generation as well as the distribution of planting material. These are the units. This is the latest unit which was installed and the people are using it. So is the extraction technique same for all the plants? Distillation for all the distillation unit for all the aromatic crops. Okay, it is same. Like the procedure is same. Okay. Yeah, all the means just like you can extract Palmarosa, lemon, tulsi, citronella from the same. Okay. And how did you like select these plants? Like what Depending was on the depending on the soil condition, weather condition, water ability, all so these factors. Okay. So can this be implemented in other regions of Maharashtra and like in other areas in the country? Under CSIR aroma mission, we already promoting different aromatic crops in Maharashtra. This is the special region because it's aspirational district, and we got the funding from DBT for this special district, because the problem is that the tribal farmer are not getting benefited from the existing cropping pattern, and migration is also there. So in order to reduce that both this area and to uplift the farmers' income, we have collaboratively by CMAP and PTK we have submitted the proposal. And right now the farmer are really happy with the cropping patterns, and they are earning a good amount of profit from it. Okay. And do you have in total 50 farmers with you in this project? Pardon, ma'am? How many farmers are attached with you in this project? Actually, within 6 months, you can say more than 100 farmers have been registered. Okay, and more than 50 farmer families are getting benefited from it. Okay. Within 6 months. Because this project has been implemented from March. Okay. Okay, that's only been a few months. That's a good progress then. Thank you. You're sharing the video right now? Yes. Yeah. Okay. Yes. दिलेजी हाच आहे ना, पाहून घ्या ना फक्त एकदा, नाही तर 2 काढले. नमस्कार, मी मालेमाल सनवणे, गाव निंबेपाडा, तालुका अक्कलकुवा,
आपले सहकारी शेतकरी म्हणजे सिंग वडवी यांच्या रोषाजवळ प्लॉट्स आहेत. आता आम्ही भेट देण्यासाठी आलो आहे. तर डीबीटी सिम्याच्या अर्थसहाय्याने बाहेरच्या माध्यमातून आम्ही 100 शेतकऱ्यांपर्यंत आम्ही रोषाजवळ रोपांची आम्ही लागवड करत आहे. आणि हा कार्यक्रम मला 6 महिना पासून आम्ही या कार्यक्रमात काम चालू आहे. तरी आम्ही त्या माध्यमातून धन्यवाद. Could you translate it for us, sir? Yeah, actually, I can say. ते आहे ना, सोनोने सर आहेत ना, सोनोने one of our beneficiaries there. He will say. सोनेने किन्ना बोलू द्या थोडंसं. ते काय म्हणत होते भाऊ? काय सांगते? वो एक किसान था महेंद्र सिंह वडवी, वहाँ वो प्लाट पे गए थे और अपना कार्यक्रम का वो डीबीटी सीमियापुर के माध्यम से और किसान के साथ काम कर रहे हैं 100 किसान के साथ, और ज्यादा से ज्यादा कैसे कवर कर ये होगा इस बारे में हम काम कर रहे हैं. तो बात की थी. तो मैं आप ही से ये सवाल पूछूंगी. अभी प्रोजेक्ट को ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको बाकी आपके मतलब जीवन शैली पे कुछ फर्क नजर आया है? जो आपकी इनकम बढ़ी है इस प्रोजेक्ट से, तो क्या बदलाव आए हैं? मतलब आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह पे, आपकी शिक्षा मतलब उनकी शिक्षा वगैरह पे, और आपके स्वास्थ्य पे कुछ बदलाव आया है इसकी वजह से? तो मैम ज्यादा करके ये सही टाइम पे वो किसान को ना वो मिलता है. अभी ज्यादा करके दूसरे इनकम नहीं निकलता, तो ज्यादा पहले निकल जाता है. तो फैमिली किसान के लिए वो खर्चे के लिए ज्यादा अच्छे निकल आता टाइम पे पहले. तो वो थोड़ा और बाद में इधर वो क्रॉप आता है, तो उससे पहले वो इनकम आ जाता है. ठीक है. और आप और कुछ कहना चाहेंगे? आपको मतलब कैसा लगा ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के? अच्छा है मैम. अभी ज्यादा से ज्यादा किसान के साथ हम काम करने वाले हैं. ज्यादा से ज्यादा किसान कैसे इसमें भागीदारी लेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम बढ़ना चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं. ठीक है, धन्यवाद. और आपके साथ जो और लोग हैं वो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, एक बात है कि जी सर. मोस्टली हम जिस एरिया में अभी काम कर रहे हैं वहाँ का लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो है किसान का वो 2 से 2.5 एकड़ तक ही है. तो मोस्टली सिंगल ही क्रॉप खरीफ का जो होता है तो वो निकाल पाते थे. रबी में मोस्टली रेसिडुअल मॉइस्चर पे कुछ आ गया तो आ गया, लेकिन नो क्रॉपिंग पे ज्यादा जोर होता है. ये जब हम जो ये वैरायटी जो है एरोमेटिक की ये इंट्रोड्यूस करने के बाद में एक तो सीधा है कि आपको ट्रिपल क्रॉप के साथ साथ डबल इनकम दूसरा वाला भी आपको अवेलेबल हो जाता है. और अभी किसानों का झुकाव भी इन सारे एरोमेटिक स्पेसिस के ऊपर ज्यादा देखने में आ रहा है, क्योंकि जैसे अभी हमारे किसान भाई ने कहा कि उनका जो फील्ड क्रॉप होता है वो निकलने में कम से कम 4-4.5 महीना इतना ड्यूरेशन लग जाता है. लेकिन एरोमेटिक का यदि आप पामारोजा लगा रहे हो, वेटिवर लगा रहे हो या तो लेमन ग्रास लगा रहे हो, तो वो बीच वाला जो पीरियड है उसमें इनकम दे जाता है. इसलिए हर किसान का यही राय है कि एरोमेटिक होना चाहिए हर खेत को. थैंक यू सर. अश्विन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअली जस्ट हमें जो डीबीटी से प्रोजेक्ट होगा that will be a game changing for the Nandurbar people, the tribal farmers, and they are really happy with this progress. तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे ही काफी और अगर एरोमेटिक क्रॉप कल्टीवेशन जहाँ पे फार्मर जहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है ट्राइबल अफेक्टेड रीजन में अगर मिले तो इट विल बी अ गेम चेंजिंग. बाकी आप जो फीडबैक लेना है आप डायरेक्ट फार्मर से लेंगे तो दैट विल बी मोर
impact. More beneficial, yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you for joining. Can I say something? Yes, sir, sure, sir. This is Dr. Mahendra Darukar. I'm from CSIR headquarters. Welcome, sir. I'm coordinating these aroma mission activities across the country. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are, sir. So this actually, if you look at this, I belong to that area. I'm basically, my native is Vidarbha. And if you look at this area, the Satpura range of it is actually this Pamarosa, what the local people call as the Tikhadi, is the native crop of there. It grows wild. So what our experience that this Pamarosa oil produced in that region, in Satpura region, is giving very good quality, what is required by the industry. So that's why we had a tripartite agreement with one of the company, that Nishant Aroma is Mumbai, and PIF and CMAP. So this that company will purchase all the essential oil produced at Nandurbar at the prevailing market. You had asked one question that what are the other parts of the Maharashtra? Actually, if you look at this Pamarosa specifically, I'm talking about, so whole Satpura range, that is from this Nandurbar to then there is 2-3 districts of Maharashtra, Akola, Amravati, and it goes to up to some part of Nagpur region. So if you extend this activity to those areas also, so because it's a native crop going wild, if there is a scientific intervention, if you introduce the improved varieties and give them the good, efficient extraction unit, then I think farmer will be getting what is the government's agenda is doubling the income, but I think that could be like 4 times, 5 times income. So I think that is the major thing. So I think DBT, I would request and thankful to DBT for supporting this action. But if DBT could extend this support to other part of that Satpura region specifically, and there are other also regions like there is one district of Algar, was earlier as an aspirational district, but now it is not. There is another aspirational district in Maharashtra called Gadchiroli, and this is a satellite affected district. But if we could introduce such crops, probably that will help those people to the agriculture activities, and probably the Naxalite activities will be reduced. So and that is another thing. Because this we have experience in the Bastar in Chhattisgarh area. So there we have introduced lemongrass. So it was the environment for lemongrass. So we are doing there, and there people are happy getting the good income from their own land. So I think PBT can support such activities in other parts also. Thank you so much for this opportunity. Thank you, sir. Thank you for the comments. Thank you. Thank you, sir. Thank you. For the next session, I'll ask Dr. Kinkini to take over. Okay, Mr. Subodh Kumar will take over for the next session. Yeah, thank you, Sirat. Subodh sir is here. I'm giving over to him. Thank you, Siratji. So the next technology is value-added products from natural plant materials. And for this technology, we have with us Professor Vivek Kumarji from IIT Delhi. And after that, we'll have interaction with changemakers, Mr. Chakrabhusan Pandeji and Mr. YP Singhji. And along with him, there will be Mrs. Meeta Viswasji for the discussion. So first of all, I request Professor Vivek Kumarji to please brief about the technology. Vivek sir. Hello. Yeah, Vivek sir. Welcome to the session, sir. Vivek is busy in some JEE advanced work. Okay.
Myself, Professor Naik, I'm co-investigator with Professor Vivek. Okay. Can I share my PPT? Sure, sir. Sure. Welcome to the session, sir. Thank you. Thank you for joining the session. Please, please brief about the technology. Basically, this science technology intervention for the value addition of natural plant resource and livelihood generation. So this project, Professor Vivek and myself from Center for Rural Development Technology. So in this, we have taken four product. One is the mushroom cultivation, and second one is the lemongrass cultivation, and third one is on neem seed collection and value addition, and fourth one is the cannabis value added product from cannabis. So basically, our project area is in Uttarakhand. So in Uttarakhand, we have taken one village area, that is like Gindi Khata area. So in that Gindi Khata, that most of the farmers they're cultivating different type of crops, but their during lean period of cultivation, like in the month of November to December, so they don't have any activity, November to January. So first one, we have introduced the technology, that is a mushroom cultivation. And basically in this mushroom cultivation, we have taken 15 to 20 household of farmer, and we make a WhatsApp group of this farmer, and then we share the technology with the farmer. And in that, I think Sudhakar is one of the participant beneficiary. So he will talk about the mushroom cultivation as an enterprise. So basically, you can see that here we have introduced, one is the bottom mushroom, other one is the dhingri mushroom. So both we have taken. And in India, you can see that 73% bottom mushroom is marketed, and 16% is the oyster, and 7% is the paddy straw mushroom, and 3% is milk mushroom. And shiitake is the costly mushroom, medicinal mushroom. So basically, in our technological intervention through Unnat Bharat Abhijan, so we have taken the survey of that area, and we took around 15 to 20 farmers, and then we have make a training program along with the Department of Horticulture and Food Processing of Uttarakhand State. Then we gave guidance through expert in mushroom cultivation, and household training on cultivation and other awareness and capacity building we have conducted. And basically, you can see that farmers are engaged in that, and they are earning around 8 to 10,000 rupees during the per month, I think. So, and then they get employment opportunity in that area, and also they have a nutritional and other benefit from the mushroom cultivation. So they are marketing mostly bottom mushroom, and in the bottom mushroom we have given the training on composting, spawning, then casing and growing, all that things. This is the we have given that detail. Another one also mushroom cultivation related to oyster mushroom, and this activity we have taken from CSIR from ONGC, that is, and we have given some spawn, then polybag, then we give money for composting, and farmer also they are using around 2,000 rupees, and out of 5,300 from our IT side, the Unnat Bharat Abhijan scheme. And later on, the byproduct of the mushroom cultivation that they use for cultivating your horticultural crop like fruits, vegetable, and other things. And they're growing many vegetable, and they're getting more yield from that byproduct of the mushroom cultivation. And we have also make a farmhouse, basically 2 units going to start.
And this unit, they are getting around 1000 to 1200 kg of mushroom per day. That is a slightly bigger size and scale up process. And that is one. And under this, I think we are trying to introduce one district, one product according to government. So mushroom is the one of the product of the Haridwar district, that Gindi Khata is in that area. And second problem, I think, just like I think recently you might have seen that Dr. Deepak Narware, he has given about the cultivation of aromatic plant. And basically this area, village, Chidiapur, that is a region, and where lot of monkeys are destroying the farmer crops and other things. The farmer are unable to grow any vegetable or other things. So in that case, we introduce this crop like lemongrass. And lemongrass, I think monkey, they don't like to destroy the lemongrass and all that. So we have taken around 10 hectares of land in that area, and then 10 hectares the farmers are cultivating, and according to them, I think per acre they are getting around 50 liter of essential oil, and per hectare it is around 125 liters. And basically the lemongrass is also similar, like we have calculated that in 10 hectare the farmers get 18,75,000, around 1250 liter of oil, and they sell that oil as for 1500 rupees per liter, and they are getting 18,75,000, and we reduce the cost of the cultivation, that is around 10 lakhs. So the farmer get profit of 8,75,000. So this we have introduced, I think, in Aroma Mission and all that, and we have a project with ICR, joint project with ICR, value addition of lemongrass oil and all that. So we are converting value added citral and vitamin A. And this is that 10 hectare of land, and in association of Indian Central Institute of Soil and Water Conservation, Dr. Tomar. So they have given the sampling, the lemongrass grass sampling, and we have introduced in Gindi Khata and other. We are also trying to introduce the same crop in different region of Uttarakhand. So this is, I think, we have given that different farmer of Uttarakhand region in different area. That is, we have around 9 farmers as given in, and this is, we have developed one fractional distillation unit to separate citral from the lemongrass. Then from citral to we are trying to develop a vitamin A. So we have introduced some of the distillation unit in different region, low cost, because in hilly region the fixed type of distillation is not suitable, but we are trying to develop a portable type of distillation unit so that it can move from one in hilly region, because there is a problem of transportation in a fixed zone. So different type of product we are trying to make wastage of the lemongrass to produce mushroom and essential oil, soap, and other things we are doing. And as you mentioned, one of the product is cannabis cultivation. So is it legal to grow cannabis related products, and do you have any license for that? Is any license required to cultivate cannabis? Recently, I think in Uttarakhand government has introduced the cannabis is a commercial crop. And in Uttarakhand, there is no, I think some companies are coming for cultivation, but these cannabis are growing on the wild crop. You might have seen in the roadside and other things. So it is like a weed. So in this cannabis, I think we have submitted a project to DST, the Science and Society Division, and we are trying to isolate various type of value-added product. And mostly cannabis is a fiber crop, and from fiber crop you can isolate your fiber, cellulose, and all that, and we can add value to that underutilized biomass.
So basically, it contains 74% fiber content and 35% cellulose. And besides this, cannabis leaf and all that contain 400 bioactive compound like cannabidiol, polyphenols, flavonoid, terpenoid, and other waxes and all that. So we have already done some work related to the extraction of the cannabis leaf and all that, and we can get 3 to 7% of the cannabinoid, THC, CBD, and THCV. So these are used as a pharmaceutical sector as a drugs. Another one also we have done because in Uttarakhand, a lot of people are using seed for making chutney and all that product. But seed also contain around 39 to 40% oil, and the hemp seed oil has a very high omega-3, omega-6 fatty acid, and it can be sell as a for production of omega-3, omega-6. And besides that, this cannabis seed contain lot of protein, and that protein is better than soya protein. So we have compared that things, and we are publishing that paper recently. We have done one of our PhD student, Falguni Patnaik, is working with Professor Vivek and myself. And the third one is that we are doing the lot of fiber from that, and that we are giving that you that the treated biomass we use subcritical high, slightly high pressure. 190-degree temperature, 335 bar, and we separate the subcritical water treated biomass, and from that biomass we can separate the cellulose fiber, and cellulose fiber can be used as a handmade paper, and this can be used for making fiber and other things, because this biomass is going west in the hilly region, even UP and all that area. So we are working on that also, and we have done subcritical water hydrolysis of the cannabis fiber to get soluble sugar, and the sugar composition also we have done glucose, then xylose, arabinose, and all that. For sugar to different soluble sugar, we are getting around 16% or something, and that can be converted to furfural and 5-hydroxy methyl furfural and high value chemicals from that crop. And this is we are trying to develop a small scale unit making pulp, and from pulp after bleaching and all that you can make different type of product, packaging material or other thing. It will create livelihood in the rural area. So basically we have done the supercritical extraction of the cannabis leaf to extract wax and high value item, and the residue cannabis oil and all that. Uh, Another one is the neem, because in Gindi Khata area, because of that doing farmer and low cost input for farmer, because neem is a rich source of azadirachtin and all that. So mostly the problem of neem is the harvesting, and we have done the work in IT Delhi. We have developed a technology to how to harvest neem, because if you harvest manually, then per day one man can get around 10 to 15 kg of seed. But you require a harvester, and you can collect a good quality of fruit, and from fruit you can separate the pulp, and that pulp can be used. Around 40% pulp is there. That pulp is used for jam and jelly. We have developed a product like jamun or mango and different type of fruit, and mixed with neem pulp. So that is a new product we have developed. And the skin can be used for biogas and other things. But neem seed, after getting the pulp, 50% seed, then after decortication, drying decortication, you can get the seed. And the seed husk can be used for agarbatti or mosquito repellent product. And the neem seed kernel, after taking out the oil is around 48 to 45%. And that oil can be Sir, you are not audible.
Sir, please switch on your audio. You are not audible to us. Sir, can you please unmute your mic? You are not audible, sir. Okay, so in the meantime, we'll move to the change makers. So, do we have with us YP Singh जी? YP Singh जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? मीता विश्वास जी. या SHG एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज से हमारे साथ कोई जुड़े हुए हैं? Chakrabhushan sir, can you please unmute your mic? Yes, please. Yes. Sir is trying to connect himself. So network issue is there. Wait for a moment. Sure. Yes, please. So we have Kashmiri Singh ji and Sudhakar ji. Okay. And one of the beneficiary, she is Mita Biswas. She is on lobby area. Can you admit her? She's in lobby area. Yes, please admit her. Kumkum Biswas. Admit Kumkum Biswas. She is in lobby. Admit her. Am I audible? Sorry. Yes, sir. You are audible. You are audible. Please continue. Okay, so sir, as you are mentioning about some of the problems you are facing with hing harvesting, so in that area, what are the risks associated with mushroom cultivation? Mushroom cultivation. Yes. Once again, please, sir. Yes. Sir, would you like to repeat once again? Yeah. So as you mentioned, some of the problems which are associated with hing harvesting. Likewise, is there any associated risk to the mushroom cultivation? Yes. What are the risks associated with mushroom cultivation? थैंक यू सर. मशरूम कल्टीवेशन यहाँ पे जो गैंडी खाता क्षेत्र में किया गया था वो बिल्कुल उस क्षेत्र के लिए पहली बार था. वो जो हमारे 5 गांव हैं वो वन क्षेत्र में आते हैं. राजा जी नेशनल पार्क और चिड़ियापुर रेंज में होने के कारण पूरा वो सभी गांव जंगल से घिरे हुए हैं. तो वो लोग जंगल से मशरूम लाते थे और खाते थे बरसात में, पर ऐसे सालों भर वो मशरूम कभी न किए थे. उनको लगता भी नहीं था मशरूम घर में उगाया जा सकता है. तो जब वो मशरूम करने के लिए तैयार हुए तो सबसे पहली है कि करने की स्किल्स किन्हीं में नहीं थी. और जब हम लोग स्किल लेने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए देहरादून गए तो वहां पता चला कि नहीं, ट्रेनिंग करने के बाद
जो भी डायरेक्शन है उसको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज मशरूम खराब हो सकता है। तो मशरूम कल्टीवेशन की सबसे जरूरी चीज है जो मशरूम को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो हाइजीन। आप जिस कमरे में कर रहे हैं वहाँ बहुत हाइजीन होनी चाहिए, और हवादार कमरे का टेम्परेचर भी 8 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। उसके बारे में हमारे विशेष से हमारे साथ एक किसान है सुधाकर जी, वो बताएंगे। एक बार पहले सर अपना पूरा फिनिश कर लें, उसके बाद फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। सर रिकनेक्ट किया सर ने। Sir, please. So in NEEM we have developed depulper, decorticator and all the things. And after that also we have demonstrated oil table type, I think cold press oil expeller. And that oil expeller we can get around 40-45% oil from and this de-oil cake can be utilized for azadirachtin. We have done the technology for 40% azadirachtin concentrate in lab, but that cost of the 40% azadirachtin rich product is selling as 44,000 rupees in the market. So basically in neem oil also we have developed that, but in market according to Bureau of Indian Standard, the neem oil-based formulation can be sell 300 ppm azadirachtin, but azadirachtin concentrate product by pesticide is 1500, 3000, 5000 ppm concentrate, and we have developed a different type of product for anti-larvicidal product neem oil with anethomsoa, that dilapiola, and that can be used to replace DDT type of malaria control. And in a, for another product, I think we have given that is mosquito repellent type of product also there we have developed, and this can be transferred for livelihood generation in the rural area. And we have used the cell of the neem seed, that husk, so that can be used to make agarbatti and other thing in mosquito repellent product. And neem oil de-oil cake can be used as a biofertilizer. So we are planning to conduct some training program and all that in future. And we have, in conclusion, we have done the cultivation of lemongrass and lab scale optimization, field implementation, mushroom cultivation, lab scale optimization and field implementation. Then cannabis and neem, that is already we have done on lab scale, but we'll implement field level implementation in the Uttarakhand region and all that. And in our experience sharing, Dr. Chakrabhushan Pandey, he is here, YP Singh, Meeta Vishwas, and Kashmiri Lal and Sudhakar. So Sudhakar will tell about mushroom cultivation, and Kashmiri Lal, he is involved in the lemongrass cultivation. Thank you very much. Thank you, sir. But I have one question for you. As you mentioned about the neem oil, so neem oil is used as a mosquito repellent, right, sir? So कोई इससे रिलेटेड कोई रिसर्च हुआ है कि कितना परसेंट इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस क्या है इसका नीम ऑयल का एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट? नाइट सर। यस, थैंक यू सर। हम लोग अभी यस, थैंक यू सर। नीम का जो मॉस्किटो अगरबत्ती बनाए हैं वो हम लोगों ने IIT दिल्ली के रिसर्च लैब में अभी हम लोग तैयार किए हैं, और इस पे एक पेपर भी पब्लिश किए हैं हम लोग, जो कि पूरे रिसर्च पे आधारित है। और अभी हम इसे फील्ड पे लेके नहीं गए, अभी लैब तक इसके सीमित में है, लैब तक सीमित है। अब हम इसे फील्ड पे ले जाने के लिए वो रिसर्च पेपर हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। जी, यस, ठीक है सर, थैंक यू। इसमें हमारे एक स्कॉलर हैं, ये फाल्गुनी, तो ये इस पे काम कर रहे, रिसर्च इनका नीम पे ही है, तो उन्होंने इस पे एक रिसर्च पेपर लिखा, वो आपको अवेलेबल हम करा सकते हैं। अब हम इसे लैब से फील्ड पे ले जाने के तैयार हैं।
ओके, ठीक है। तो चंद्रभूषण जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या आप कल्टीवेट कर रहे हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू। अभी जो हम लोग IIT दिल्ली से उत्तराखंड के गैंडी खाता क्लस्टर में काम कर रहे हैं, उसमें बेसिकली 3 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम कर लिए। 2 कम्युनिटीज पे अब लीड कर रही है और एक हम लोग नीम पे करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत की वो मशरूम कल्टीवेशन से स्टार्ट किया। जब हम लोग उस क्षेत्र में गए, वहाँ के आसपास लोगों से मिले, तो लोगों का कहना था कि सर हम लोग तो खेती गृहस्थी कर लेते हैं, लेकिन ये जो नवंबर टू जनवरी वाला सीजन है उसमें हम लोग काम नहीं मिलता है, या बहुत कम से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो काम नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन के लिए लोगों को ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग करने के बाद 5-6 लगभग हर गांव से एक लोग मशरूम कल्टीवेशन, सीजनल मशरूम कल्टीवेशन बटन मशरूम से स्टार्ट किए, और फिर वो फरवरी तक बटन मशरूम किए, और उसके ठीक बाद वो मशरूम कल्टीवेशन करने के बाद उनका इनकम अच्छा रहा, उनको मार्केटिंग के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। छोटे स्केल पे कर रहे थे, तो आसपास में ही जो गांव है और जो वीकली मार्केट है वहां पे उनको बिक जा रहा था। और जब मशरूम कल्टीवेशन करने लगे तो रोज घर में 200-300 रुपये भी आ रहे थे, तो एक खाने के लिए भी रोज पैसा भी, तो एक अच्छा उत्साह लोगों में दिखा। और फिर सीजनल से बढ़ के, बटन से बढ़ के वो लोग फिर मिल्की दूधिया मशरूम पे आगे, ऑयस्टर मशरूम पे। जी चक्रभूषण जी, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये वैरायटीज है मशरूम के जो कल्टीवेट कर रहे हैं वहाँ पर फार्मर्स, तो क्या ये सारे इंडिजिनियस हैं? ये दोनों मशरूम हमारे देश में, बटन मशरूम मोर देन 70% लोग खाने और बेचने में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये बटन मशरूम बिल्कुल इंडिजिनस है। और उसके बारे में बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम दोनों जब हम लोग कर रहे थे वहां पे, तो उसी क्षेत्र के 2 एंटरप्रेन्योर आए और उन्होंने बड़े प्लांट लगाए जो कि 24/7 सालों भर वहां पे मशरूम की खेती होती है। और अभी दोनों प्लांट में करीब 80-90 लोग को रोज मजदूर के रूप में काम भी मिलता है। जब वो आते हैं तो वो मजदूर रहते हैं और फिर कुछ दिन के बाद वो स्किल लेबर में बदल जाते हैं। तो हम इसमें जी अब इन फार्मर्स को जो आप कल्टीवेशन से रिलेटेड जो जानकारियां देते हो, ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को? हम ट्रेनिंग कन्वर्जेंस से किए थे फूड एंड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट उत्तराखंड के साथ में, देहरादून में। इनको वहां जाके 3 डेज का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग मिला था, और फिर उनको वापस ले आए थे। और पहली बार इनके लिए हम जो कंपोस्ट था वो किन्हीं से खरीदे थे, एक्सपर्ट है वो देहरादून से। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे ट्रेनर थे, और किसान और हम लोग IIT दिल्ली से सब मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और इनकी जो डे टू डे एक्टिविटी की अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती थी या कुछ अच्छा भी हुआ तो ग्रुप में शेयर करते, फिर यहाँ से इनको गाइडेंस मिल जाता था और सपोर्ट मिल जाता था। तो वो दूरी नहीं था कि देहरादून से भी कोई थे और दिल्ली, IIT दिल्ली से भी थे, और गैंडी खाता से भी थे, पीलीपड़ा से। तो वो दूरी नहीं था, जो भी इशू था हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सब एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाते थे। यदि आप कहें तो हमारे एक फार्मर हैं जो मशरूम कल्टीवेशन से जुड़े, वो अभी अपना एक्सपीरियंस जी मैं उनसे बिल्कुल बात करना चाहूंगा। उससे पहले लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो आपके मशरूम जो कल्टीवेट कर रहे हैं, इनका न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है? न्यूट्रिशन क्या क्या पाया जाता है इसमें, न्यूट्रिशनल वैल्यूज? थैंक यू। ये मशरूम कल्टीवेशन एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो स्पेशली लोग कहते हैं कि हम अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो ये खा के अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए ये बहुत ही जो हम लोग ये विटामिन D, C, A सारे तरह के विटामिन मशरूम में है। तो खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ही न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। और प्रोटीन, ये सारी जरूरतों को हम पूरा कर सकते मशरूम से। ओके, तो सर इसका भी कोई आपने लैब में टेस्ट किया होगा कि ये सारी चीजें उसमें मौजूद है? हाँ, ये सब चीज प्रोफेसर शर्मा जो IIT दिल्ली से ही है,
ये इन्होंने टेस्ट करने के बाद फिर हम लोग वहां पे ले गए थे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप बेनिफिशियरी जो जुड़े हुए हैं उनसे आप बात करा दें एक बार। यस प्लीज सुधाकर जी, आप ज्वाइन किए हैं तो एक बार आ जाएं। सुधाकर जी है क्या? सभी को सर नमस्कार। यस सुधाकर जिले के छोटे गांव से हूँ। सर मैं पैसे से किसान हूँ, खेती करते हैं। हम नॉर्मल खेती करते थे पहले, जैसे गन्ना हो गया, गेहूं और धान की खेती करते थे सर। तो यहाँ पे रोजगार की सर बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि गांव है तो यहाँ पे रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता है। तो सर हम सन 2018 में हमें मौका मिला IIT दिल्ली से जुड़ने से, उन्नत भारत अभियान से जुड़े हम लोग। वहां पे हमें बताया गया कि मशरूम को हम लोग घर में उगा सकते हैं, क्योंकि सर पहले तो हम लोग बरसात के मौसम में जंगल से लाते थे, जो प्राकृतिक तरीके से मशरूम उगता है उसी को देखा था, तो उसी को खाया था। सर हमें नहीं पता था कि घर में भी मशरूम को उगाया जा सकता है। उसके बाद IIT दिल्ली द्वारा सर हमें प्रशिक्षण दिलवाया गया है देहरादून से, और सर हमें पता नहीं था कि कंपोस्ट कैसे बनता है। तो दिल्ली की IIT दिल्ली की तरफ से सर हमें बैग्स, जो कंपोस्ट बैग हैं सर, वो प्रोवाइड कराए गए। सर उसके लिए हमें प्रशिक्षण में बताया गया था कि उसके लिए एक रूम तैयार करना है घर में। सर हम लोगों ने एक रूम को साफ किया और उसमें वो बैग वगैरह लगाए। स्टार्टिंग में सर हमें कुछ पता नहीं था कि इसको कैसे करना है, जो ट्रेनिंग में दिया था सर वैसे ही हम लोग करते रहे। तो सर फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि उगेगा या नहीं उगेगा। सर थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो व्हाट्सएप पे सर ग्रुप था, उसमें सर जुड़े हुए थे तो जानकारी लेते रहते थे सर। पर सर हमारा जब मशरूम उगा तो सर बहुत अच्छा हुआ और अच्छी सर पैदावार हुई हमारी। लेकिन सर हमारे सामने फर्स्ट टाइम समस्या आ गई कि गांव में कोई सर जानता नहीं था उसको, क्योंकि प्राकृतिक तरीके वाली देखी हुई थी। वो सर उसकी जड़ में थोड़ा अंतर था, और सर उसका जो आकार है तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत वो था सर। सर स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसे ही गांव में बांटा, अड़ोस पड़ोस में सर बांटा हम लोगों ने मशरूम। तो सर जब गांव वालों ने खाया और उसका सर जो स्वाद था सर उनको अच्छा लगा, और सर बाद में वही लोग हमारे सर ग्राहक भी बन गए। फिर सर हमने बाद में उन्हीं को बेचना शुरू कर दिया मशरूम, और सर धीरे धीरे हमारा जो उसमें अच्छा मुनाफा हुआ सर। और हमने ये नवंबर में, तो मार्च लास्ट तक सर हमारा मशरूम निकलता रहा। मार्च तक हमारा बढ़िया, मार्च फर्स्ट तक सर बढ़िया चला सर। 5 किलो, 6 किलो, 7-8 किलो सर पर डे निकलता था। और सर हम 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचते थे, तो 400-500 रुपए पर डे सर हमारा बन जाता था सर। लेकिन मार्च के बाद सर क्या होता है कि टेम्परेचर हाई चला जाता है सर। इसके लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए सर, स्टार्टिंग से 12 दिन के लिए सर 24 चाहिए होता है। और जैसे ही सर मशरूम उगना शुरू होता है तो उस टाइम पे हमें चाहिए होता है सर 16 डिग्री समथिंग, 16 से 18 डिग्री। तो सर वो दिसंबर और जनवरी में रहता है सर, और फरवरी। तो सर उसके बाद जैसे मार्च में आता है सर, मार्च में टेम्परेचर बढ़ने के कारण सर वो निकलना बंद हो जाता है मशरूम। तो सर हम लोगों ने क्या किया कि मशरूम उसके बाद सर वो जो खाद था सर उसको हमने खेतों में डाला। तो सर उसमें सब्जियां लगाई सर। उनसे क्या देखा कि उससे जो उसका खाद था सर उसमें सब्जियां भी अच्छी हो रही हैं, तो सर उसका हमने इस्तेमाल किया सब्जियों में। फिर सर मार्च के बाद हमारे पास दूसरा एक और मशरूम था सर, डिंगरी मशरूम। उसकी भी सर हमें ट्रेनिंग दी गई थी। तो सर हमने उसके बाद डिंगरी मशरूम का जो कंपोस्ट था उसको सर घर में ही बनाया, और घर में बना के सर हमने स्पून, तो सर हमें IIT दिल्ली की तरफ से सर मिला था डिंगरी मशरूम का। तो सर उसको हमने घर में उगाया सर। उसका एक्सपीरियंस भी हमारा अच्छा रहा सर, उसमें बढ़िया मशरूम हुआ। लेकिन उसके साथ ही सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई कि वो दिखने में थोड़ा हमारी दिक्कत आ गई सर, क्योंकि उसका आकार सर अलग था, छतरी टाइप का आकार था। तो गांव वाले उसको नहीं जानते थे, तो सर यहाँ तो बटर आप देख के सर पसंद करते थे, उसको लोग बाग पसंद नहीं करते क्योंकि उसका आकार सर अलग था। तो सर उसको पालना भी इतना अच्छा उसकी शायद हम लोग नहीं कर पाए। तो सर डिंगरी मशरूम का जो कंपोस्ट था उसको भी हम लोगों ने खेतों में यूज किया। फिर सर हमने देखा कि हमें फायदा था। तो सर हर साल एक बार तो सर IIT दिल्ली के द्वारा हमें मिला था, बैग मिले थे। लेकिन नेक्स्ट दूसरे ईयर में सर हमने खुद अपने आप बैग खरीदा और सर हमने लगाया, तो उसमें भी सर हमें अच्छा। फिर सर हर साल हम इसको सीजनल करते रहे सर। और उसके बाद हमारे गांव में ही किन्हीं सर एक प्लांट खोला है, 6 रूम का प्लांट है जिसमें साल भर मशरूम उगता है। तो सर जब हम सीजनल कर रहे थे तो सीजनल के बाद सर कोई काम नहीं था, तो सर फिर हमने यहाँ पे प्लांट भी ज्वाइन किया, और सर अब हम प्लांट में भी करते हैं। तो सर जैसे सीजनल आता है तो सर सीजनल घर में भी करते हैं। तो सर हमारा अच्छा
ये सर हमारा फोकस है। सुधाकर जी, आप ये बताएंगे जो मशरूम आप पैदावार करते हैं मशरूम का, तो वो आप मशरूम ऐसे ही एज इट इज बेचते हैं या उसको आप ड्राई करके भी प्रोडक्ट बना के बेचते हैं? नहीं 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 सर, ड्राई नहीं सर, जो हमारा बटन मशरूम है सर, इसको तो हम तुरंत ताजा तोड़ते हैं सर, ताजा ही बिक जाता है। और सर जो ड्राई, जो हमारा डिंगरी मशरूम है, उसको हम लोग ड्राई करके बेच सकते थे, लेकिन सर उसको, सर जो उसका आकार था सर, उसकी वजह से गांव वाले सर जानते नहीं है उसको, तो सर थोड़ा उसको दिखने में अजीब था, तो सर लोग बाग नहीं खाते थे। हमने सुखा कर रखा सर, सुखाने के बाद सर खुद ही खाना पड़ा वो बाद में इसका, क्योंकि किसी ने लिया नहीं सर, यहाँ पे आस पास मार्केट में भी नहीं बिका सर। तो सर जो बटन मशरूम है उसको तो सर ताजा ही बिका है सर, वो उसकी डिमांड अच्छी भी रही सर यहाँ पे हमारी। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सुधाकर जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। और नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वाईपी सिंह जी टू प्लीज अनम्यूट योर माइक। ये अभी वाईपी, एक्सक्यूज मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी। अभी वाईपी सिंह जी नहीं, हमारे साथ हैं काश्मीरी लाल सिंह जी। मीता अच्छा। विश्वास जी दिख रही है क्या? मीता विश्वास जी वो एडमिट नहीं हो पा रही थी, नेटवर्क इशू था। अभी हमारे साथ काश्मीरी सिंह जी हैं, और ये हमारे वन ऑफ द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, और इनका काम लेमन ग्रास में है। अच्छा। थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बता देना चाहेंगे कि लेमन ग्रास इस क्षेत्र में हम लोग क्यों लेके गए। ये पूरा क्षेत्र कृषि और पशुपालन पे आधारित आजीविका है इन सभी गांवों में। और कृषि में जो भी लगाते हैं उसे मंकी और एलिफेंट, नीलगाय जैसे वाइल्ड एनिमल्स इनके फसल को नष्ट कर देते हैं, खा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनके आंखों के सामने इनके फसल एनिमल्स खा रहे होते हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाते, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एलिफेंट खा रहा है इनके गन्ना को या मुंजी को, तो ये कुछ कर भी नहीं पाते और सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने जो जंगल के आसपास वाला क्षेत्र है वहां पे लेमन ग्रास इंटरवेन करने का प्लान किया, और फिर इस तरह से लेमन ग्रास वहां पे आया। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके आगे हमारे साथ कश्मीरी लाल सिंह जी हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे जानवर से भी सुरक्षा मिले और आगे ये क्या कर रहे हैं। कश्मीरी लाल सिंह जी प्लीज ज्वाइन कीजिए। कश्मीरी लाल सिंह जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। चक्रभूषण जी, आप एक बार देख सकते हैं क्या हमारे साथ जुड़े हुए कश्मीरी लाल सिंह जी? अच्छा, ज्वाइन हो रहा है सर। ओके सुधाकर जी, तब तक आपसे एक क्वेश्चन है, हमारी कलीग मैडम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सुधाकर जी, आप जुड़े हुए हैं ना? जी सर, जी सर। हेलो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोग मशरूम से मशरूम बड़ी वगैरह बनाते हैं, मशरूम पिकल्स? नहीं नहीं मैम, पिकल तो बनाया था मैम हमने, क्योंकि ज्यादा उग गया था तो मैम बिका नहीं, मतलब बिकने में थोड़ा दिक्कत आया था, तो पिकल तो मैम बनाया था। और मैम उसको सेल भी किया हम लोगों ने। मशरूम में से बटन मशरूम उगाते हैं या ऑयस्टर मशरूम वगैरह भी है? मैम हमने बटन भी उगाया और ओस्टर भी मैम, लेकिन ज्यादा जो हमने उगाया वो बटन उगाया था। लेकिन ऑयस्टर मशरूम का प्राइस मार्केट में हाई है अगर ड्राइड करके बेचते हैं तो। यस मैम, लेकिन हमारे यहाँ, क्योंकि मैम हमारा गांव जंगलों के बीच में मैम थोड़ा अंदर, थोड़ा आउटसाइड है, तो मैम यहाँ पे उसकी डिमांड इतना नहीं है मैम, उसको हम बेचने में। लेकिन ऑयस्टर मशरूम आप मतलब मार्केट में बेच सकते हैं अगर ड्राई करके आप बेचते हैं तो। उसके लिए हमें देहरादून या कोटद्वार की तरफ मैम दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैम जो हमारी बटन मशरूम है मैम लोकल में बिक जाती है।
अच्छा, कितने रुपए के बिकता है, कैसे बेचते हैं आप? मैम हमारा प्राइस के हिसाब से बिक जाता है मैम, मशरूम ना 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है मैम। 100 रुपए पर केजी। यस मैम। ठीक है सर, थैंक यू। कश्मीरी सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है तो आप बोलिए। हाँ, मेरी आपकी आवाज तो आ रही है सर। जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो हाँ, हाँ वीडियो नहीं आ रही, क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए? आप अपने लड़का को बोलिए कि वीडियो अनम्यूट करेंगे। वीडियो अनलोड करना है जी। कि लड़का चला गया ना, वो चल रही बात। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। प्लीज आप बोलिए। हाँ, मैं कश्मीर सिंह बोल रहा सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार, मैं कश्मीर सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। सर बताएं आप कैसे लेमन ग्रास उगा रहे हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? हाँ सर, इसके लिए तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो शुरू में दिक्कत हुई है, मतलब जब पौध के लिए भी पौध सरकार ने दिया है हमें, और बहुत अच्छा लगा। हम वो पहले तो हम सोच रहे थे कि मतलब नई खेती है, होगी नहीं होगी, कुछ लोगों और ने छोड़ दिया, तो हमने करना शुरू किया। जब हमने पहली बार लगाया ना इसे, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है शुरू शुरू में। फिर वो जंगल के किनारे खेत था, वहाँ मतलब फसल खाद वाद की कमी थी। तो जब लगाया 1 साल के बाद, तो हमें थोड़ा सा बुरा, को अच्छा नहीं लगा। वहाँ जंगली जानवरों का बहुत नुकसान होता था, और वहाँ हाथी का पूरा रास्ता था। जब जब से हमने ये लगाया, वहाँ हाथी आना रुक गया, और दूसरा हमें उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, और जंगली जानवर तो उसे कुछ खाता ही नहीं। ठीक है भाई। तो अब ये लगा लो आपकी 2 साल तक, सन 2019 में लगाया था मैंने। तो 19 में तो थोड़ा कम मिला, दूसरे साल 21 में भी थोड़ा कम मिला। इस बार जो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे पास प्लांट भी लगा हुआ है, और अब लोग बात सोच रहे हैं कि हाँ हम भी लगाएं और हम भी लगाएं। तो लगा के अच्छा वो हो रहा हूँ ट्रेंड। तो आपने बताया प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है? प्रॉफिट सर ऐसे हुआ कि पहले तो हमें नॉलेज नहीं थी, हमारा प्लांट नहीं था यहाँ। जी। हमारे पास तेल निकालने का प्लांट नहीं था, प्लांट दूर था हमारे से, तो हमें वहाँ काट के ले आना पड़ता था। और इस बार मतलब पिछली गर्मियों में प्लांट हमारे यहाँ लग गया, हमारे खेत में भी। तो प्लांट से हमें बहुत फायदा हुआ। प्लांट से हमें 3 महीने में हमारा कटाई चालू हो जाती है, और तेल निकालते हैं, तेल निकाल के हम सहकारी समिति में दे जाते हैं। अच्छा, तो तेल पर लीटर कैसे बेचते हैं आप लोग? ये किलो का हिसाब होता है सर इसका। किलो के हिसाब होता है? अच्छा, जी। कैसे किलो बेचते हैं? 1550 रुपये किलो। 1550 रुपये किलो। ओके। तो ये आपकी जो पहले आमदनी थी, जो लेमन ग्रास को उगा रहे थे उससे पहले, और अब जो आमदनी हो रही है, उसमें कितना आपको बेनिफिट हो रहा है? कितना क्या फर्क है? पहले आप कितना कमा लेते थे, और अब जो ये इंटरवेंशन आपने लेमन ग्रास उगाया है, इस इंटरवेंशन के बाद आप कितना कमा लेते हैं? सर देखो, कमाई तो लगभग ही होती है। उसमें हाथ जानवरों को बहुत नुकसान होता था, मतलब सामने सामने जानवर खा जाते थे हमारे यहाँ। और इस समय यह है कि खेत में मतलब हमें बाढ़ करने की जरूरत नहीं, खेत में रहने की जरूरत नहीं। हाथी आएगा ना कोई जानवर आएगा, हमने 3 महीने के बाद जाके काटनी है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। तो हमें ये प्रॉफिट है उससे। ओके। तो आपके गांव में कितने फार्मर्स, कितने किसान ये लेमन ग्रास को अभी उगा रहे हैं, और आप लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है, और किस तरीके की आपको दिक्कतें आती हैं इसमें? सर हमारे यहाँ 2-3 किसान रहे, बाकी लोग बाग तो बहुत गए थे हमारे यहाँ से लगाने के लिए, जी। पर वो कर नहीं पाए, इतना सहन नहीं कर पाए, खर्चा सहन नहीं कर पाए शुरू में। क्योंकि इसमें शुरू में एक बार में खर्च होता है, शुरू साल में खर्च होता है, बस 3-4 साल के लिए कुछ नहीं होता फिर आगे। तो जो 1 साल में खर्च हमने सहन कर लिया, तो वही सब कुछ है। और 3-4 साल हमें फ्री में करने पड़ते हैं। 1 साल बोकर 3-4 साल करने। जी। तो धन्यवाद कश्मीर सिंह जी, आपने शेयर किया कि कैसे लेमन ग्रास उगाने के बाद आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। और आपका अच्छा, इसमें आप एक चीज और बताएं कि आपके फैमिली में कितने लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं? अभी लेमन ग्रास जो उगा रहे हैं, तो आपके फैमिली में ही, आपने किसान तो बताया 2-3 किसान लोग उगा रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली में कितने लोग इससे इन्वॉल्व हैं?
नहीं, हमारे फैमिली के तो सर 5 लड़कियां हैं, एक मैं 5 ही हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है कश्मीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सुधाकर जी, थैंक यू चक्रभूषण जी, और आई वुड लाइक टू थैंक SN Nayak sir for joining the session and sharing about the technology. Now we'll move towards the next session, that is roundtable discussion, and for the next session I would request Ms. Tusar continue with that. Thank you, sir. Welcome now to the third and the final session of panel discussion of strengthening and nurturing the local innovation. As we all know that through the 3 टेक्नोलॉजीज, जिन भी 3 टेक्नोलॉजी को आज हमने देखा, हम उसमें देख पाए कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कम्युनिटी की लाइफ को इफेक्ट करा है और एक पॉजिटिव चेंज हम देख पा रहे हैं। लेकिन कई रोड ब्लॉक्स थे जिनको लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने सॉल्व किया और आज हम इसका फायदा भी देख पा रहे हैं। इसके साथ ही हम इन 3 टेक्नोलॉजीज के डिस्कशन के बाद इस पैनल डिस्कशन में हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो सिस्टम की और पॉलिसी के लेवल से क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं ताकि सिमिलर जो चेंजेस हैं वो अलग जगहों पे रेप्लिकेट भी किए जा सके और इसको स्केल अप भी किया जा सके सेम टेक्नोलॉजीज को। और इसके थ्रू हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस भी प्रोजेक्ट को लेके, जिस भी टेक्नोलॉजी को लेके कम्युनिटी तक जाता है, तो किस तरीके से क्या कम्युनिटी कितनी प्रिपेयर है और अगर प्रिपेयर नहीं है तो किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सके ताकि जो कि हमारे इंटेंडेड बेनिफिट्स होते हैं वो सोसाइटी तक रीच कर सकें। आज की पैनल डिस्कशन में हमारे मुख्य वक्ता हैं पद्मश्री एस दामोदरन जी ग्रामालय से। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे रमेश शक्तिवेल सर NIURD से, विवेक कुमार जी IIT दिल्ली से, अश्विन दीपक सर फ्रॉम CSIR CIM MAP एंड प्रीतम सिंह जी जो हमारे साथ फर्स्ट टेक्नोलॉजी में जुड़े थे, जो कि एक फार्मर थे, एंड ऑल्सो डॉक्टर अनंता विशेष। So I welcome you all for the panel discussion. As is the tradition, हम सबसे पहले दामोदरन सर को इनवाइट करना चाहेंगे आज के सेशन के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दामोदरन जी ने एक NGO फॉर्म किया है ग्रामालय, जो कि तिरुचिरापल्ली में है और ये 1987 का जो है NGO है और इसका स्पेशल फोकस जो हमारा रहा है, उनका फोकस रहा है कि किस तरीके से आसपास की कम्युनिटी को, जो भी रूरल है या अर्बन है, उनमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से वो काम करते जा रहे थे, उन्होंने पाया कि एक वाटर एंड सैनिटेशन एक बड़ा एरिया है जिसपे काम किया जा सकता है। तो इसी तरीके से ग्रामालय ने एक ओपन डिफेसिएशन, जो खुले में शौच की दिक्कत थी, उसमें उसके ऊपर काम किया और इको फ्रेंडली टूल्स एंड टॉयलेट्स बनाए। और ग्रामालय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ बहुत करीबी तरीके से काम कर रहा है और एक सोसाइटी में चेंज ला रहा है। और इसी जो ग्रामालय के एफर्ट्स के कारण ही एक विलेज है तिरुचरी में, जिसमें अब टोटली इट इज द फर्स्ट open defecation free village and it was declared back in 2003 only. इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर को पद्म श्री से नवाजा है और इस कैटेगरी में किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है फॉर द सैनिटेशन एंड प्रमोशन इन विलेजेस एंड स्पेशली इन द स्लम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। सो वी इनवाइट यू सर फॉर टुडेज सेशन। दामोदरन सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके हमसे जुड़िए। दामोदर सर ने अभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो लॉग आउट हो चुके हैं, तो हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट को इनवाइट करते हैं, रमेश सर को। Hello. Hello. Yeah. Sir, Yeah, sir. you are able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. We are able to hear you, sir. Yeah.
So, thanks a lot for inviting me to speak on this topic today as a panel speaker. And I was listening to the other presentations also, and I am really happy to see a lot of initiatives like this and communities which are being driven by institute like CMAP and IIT Delhi under the UBA program. In fact, that's one of the area that I would stress upon, and more such initiatives. How do we get it on the ground? That is a big challenge. R&D is happening in the country, but our innovation, nurturing innovation or strengthening innovation in a local context is what is misplaced. I think probably to tell frankly, it's like agri sector seem to be a better in a better position because of their vast network of educational institutions, agriculture universities, and extension centers, KVKs, and there are other allied research institutions which are in place. But some of the other aspects of technology infusion in villages or innovation, nurturing innovations in local level seems to be limited to certain agencies like the NIF, National Institute of National Innovation Foundation, like the DST supported entity, which is doing quite a lot of work on ground. But I think given the kind of country India is, which is large, and we have so many habitations spread over the country, and how do we actually link all of them into a in a platform wherein they can get benefited in terms of taking in technologies or nurturing their own innovations, then coming up with various products or improving their livelihood or improving their agriculture, various facets which are really challenging, except for agriculture, which has a well driven extension in place. So what we feel is most of the innovations which come is basically because of individual or private initiatives wherein they struggle and they somehow get into a level where their innovations come up and then it is noticed and it's scaled up in a big way. Like I think NIF is an example wherein they do quite a lot of work on identifying such innovations and trying to bring them to the mainstream. But similarly, we also do certain events for innovators and startups so that their innovations can be noticed by people. But I feel institutions like S&T councils and KVIC and district industrial centers, their outreach to actually to ground level is becoming a challenge, and they are limited to schemes and limited number of what do you call the space that is available for everyone to participate probably is a limiting factor. That's where I feel one of the platform is we have this example of IIT Delhi and the UVA program. Probably that is one small ray of hope that if it transforms into a larger scale exercise, and then more education institutions in the country can adopt such a mentoring role wherein technologies are identified or developed by them locally. Science and technology hubs can be embedded in these institutions. So this is missing. Currently, they are limited to their academic activity, and a science lab, like a chemistry lab, can do a lot of things what we have been speaking. And if it can be demonstrated in an area where it is relevant, like a distiller, and kept in an institution, and farmers are able to see it very closely, and this being demonstrated. See, what is missing is a demonstration and a mentoring and handholding facility in a village, closer to the village. If somebody has to learn honey making and processing, they have to go to Pune as per KVIC's facility which is there in Pune. But how do a farmer from Tamil Nadu or from Northeast can travel or something like locally? It like clusters. What I think SNX my professor who was talking before, like I'm also from IIT Delhi. So I feel their work can be mentored can be disseminated through the EBA network in large scale, that every institution which is in a geographical area
which is suited for certain kind of work could adopt that and then demonstrate, and then it can become really be picked up by farmers in the area, and the S&T component can be ensured by people who are teaching and students also. Like I feel there is a big powerhouse in the education institute which is untapped to promote science and technology in the country. So probably that needs to be a channel has to be identified. Now it is all like, what do you call, like it's all done in pieces. Like there is this proposal is funded by DST, State Science and Technology Council, gives some grants, but these are all one-time research, and then the thing is over. Like probably a long-term engagement of the education institutions as part of the S&T promotion can be a big window. So that's one of the aspects I feel which should be considered by DST in the long run. Like you create not only just research projects, but probably a dissemination center, and then from there the knowledge keeps on getting disseminated to the people in that area on at least few technologies, like various hubs in the country. I mean, district, a few institution can work on certain aspect, few institution can be like, each institution can specialize into a different area, and then there can be a real-time demonstration effect, and then the technology gets picked up. That's why you can create this local resilience. Like people can easily come and understand, and without risking, like mushroom cultivation. Mushroom is needed, and but the pricing, because there is lack of production, we have a huge price and people don't consume mushroom. It's not mushroom, so much potential health benefit is there attached to it, but in India, like except urban centers, we don't find rural markets really being given that kind of facility. The other aspect is the panchayat system, which from the Rural Development Ministry we work. I think there is a big scope. Panchayats are an entity which is going to be there, and they're going to drive development in the local area. So I think that's one potential, maybe in ways in which they can be engaged. Like I was talking to Ketaki Madam also, the PSA's office the other day. She was telling what we can do with panchayats. I think panchayats potential in terms of nurturing few technologies in an area which like I mean you when you look at establishing a facility in a village by an individual farmer is expensive. Like the distiller they were talking about for lemongrass and other things. So under certain schemes, panchayats also have funds which they can create certain technology production centers in their like the common facility centers for agriculture equipments which are coming up. Maybe like certain entrepreneurial activity and farmers processing units can be established under panchayats, and in fact panchayats are also now slowly being asked to generate their own money. So I think ministry is thinking critically that how do we engage with panchayats on a long run with funding, but probably panchayats which have the resources can generate local revenue by engaging into this, and maybe they can become the entrepreneurial hub kind of thing they operate, and then these people in villages can become they can come and do their activity production and then pay some certain royalty to the panchayat for operating the machines like that. So that is another larger area that which is untapped. So panchayats are capable. I think now panchayats are slowly becoming much more, and most of the panchayat presidents are business people. Like, if you talk to me in Tamil Nadu, like you see the political engagement, most of them have a very good entrepreneurial skills. Only thing is, how do we channelize that into a common thing rather than their individual occupation? But how do we generate that knowledge into establishing and strengthening this capacity of technology? Being a technology hub in panchayats, I think that is possible. That could be one of the things. And of course, the self-help group movement. I think the FPO movement, like what how farmers can be brought together and then
based on that, rather than only just cultivation, probably the processing. So that's where the technology requirement is there, and the schemes and more schemes facilitating that kind of activity in a village can bring in a lot more resilience, and people can confidently engage into technology-based entrepreneurial processing that can be taken up rather than this production. But a higher order value addition can be done, and the value chain can be improved at the village level itself, so that more profit can go to the farmers rather than they're just being remaining as producers. So these 3-4 aspects I feel are very important. One is the education institutions, second is panchayats and the SHGs, if you are looking at local communities, and of course strengthening and streamlining existing programs like departments, line departments which are delivering services. How do they become little more technology oriented, and then more rather than top down from what comes from the scheme, but can they become little more sensitive, or given that flexibility to develop based on the local requirements, and then nurture this kind of clusters, or this kind of innovations that can be brought up from a local area. So that's also one important thing. I feel in this context, DST's work on this core support group, I think that is what like Vigyan Ashram and their experience, and like various others with the DST core support group. How do we tap such skills or knowledge that is available in various parts of the country? Like, maybe I'm not saying I mean more funding is required, but at least the network, can it become a little more loose and flexible and lean, and there is an engagement, but it's not heavy on DST part, but technology dissemination requires such a push. So how that can happen in the DST framework itself? Like I know DST, I'm part of the member of that group, so I feel like there is difficulty in terms of funding constantly, but at least can this become a little more a movement across the country, wherein more and more players and come in, and then the science and technology aspect in rural development can be ensured? Like I know if you talk about this, I think there is a vacuum in the country that is there, with less funding coming from abroad, and the NGO movement is suffering at the moment because there is limitations in terms of tapping the funding, and also the science and technology component, which requires much more push given the advancement that we are making. I think this is the right time. I think probably such thinking can come from DST and other scientific organizations which promote science at the local level. So how do we nurture more and more local agencies which are really working on technology, and giving them a focus, and trying to really achieve what before the panel. Thanks. Thanks a lot. Thank you so much, sir. And we understand the fact that a cooperative nature and the collaborative nature in the existing scientific ecosystem is very much needed at this time, where all the scientific institutions and all the incubators and the society can work in inclusion and equity, so that we can give a technical solution, a science and technology based solution to any problem that generates out of the system, but a solution can be provided from inside the system. And also for the streamlining of the panchayat system and the local governance system, so that probably a positive solution can be provided by them by networking the problem with the solution providers. And we through this program are looking forward to such collaborations only, that so that there could be a system where the extension programs of the most of the scientific organizations are working closely with the ongoing field organization to promote a good culture of cooperation and networking. So there have been instances when many organizations have worked for the benefit of the society. However, a problem that a general question that has always been in there in the system was that
the local innovation has always been there. The frugal innovation that we usually call, and the formal innovation that occurs in the laboratories. So, how to take up the frugal innovation to the formal innovation systems so that we can have a in sync solution of the society and the scientific organization. Yeah, I mean, that's what I was mentioning about NIF's work. I think probably that is one way, like, I mean, I think that they're really placed to service this requirement. Only the scale and whether they are able to reach out to every, I mean, innovator in the country. And I mean, I think they are doing quite a lot of attempt, but and further, like right now they might be doing up to certain level of IPR, or trying to put them into commercialization of their products. So probably that if at all we find that there's still scope, I don't think they've reached to a point that every innovation would be automatically picked up and then a shape would be given. But probably that's why I said when you have platforms created at every level, like up to block, or when you want to go there, like you get lost from this. So probably the networking of education institute is one solution for us in front of us. You have people, you have trained manpower, faculty or science and technology oriented professors or teachers who are there, and students who are learning it. It makes an ideal platform. Like, and if they can be, there can be nodes which can be sensitive to certain things, and then from there it can be picked up, or it can receive, or it can process from the top, from the lab it can go down to the community. At the same time, from community it can come up. I think ideally, if you look at even a high school which is quite vibrant, a science teacher or a physics teacher who's sitting there, if he can be a node for us, like, then it's at less cost. I was telling, I think one is the cost. Like when you look at core support group, you might be spending crores of rupees annually just to a few organizations. But when you look at this as a network, SNT network, where you can go up to secondary school where labs are there, like a small chemical lab or physics lab, you have people who can understand science, and how do we actually use their knowledge and disseminate? Maybe this framework can become the answer to your question. Like, I think, I mean, then it can automatically flow in, and more systems can be created at the state and then national level. It can come through, and I think that's the solution. Otherwise, I feel right now, if you ask anybody in a village what scientific, I mean, whether somebody can talk to somebody, it is, I think there is no system that is in place. They have to search where is the NIF thing, or they have to go to the district to search for somebody who can help them. Or even if they want a higher order this thing to reach NIF, there is a lot of struggle that one goes through, and automatically it is not known to NIF. Like probably they conduct certain and show the yatras and other things where they go in. Like I know they go on identifying things, but the events are one beautiful thing that. Innovators startup conclaves and more such events. Like I understand, because we conduct annually one event, and it's so beautiful that when you conduct more and more such identification processes are there, you can get picked up with new things that are coming up in a village situation, or locally what people are doing, and then further support like organizations like NIF and others can really then bring that to a higher level finished product, or it can be commercialized after standardizing. So then the labs can help, like different labs can help. So that's a gap which needs to be bridged, and that's in that context I feel education institute help is really, I mean, going to be useful. UBA is one, like definitely it's getting networked with certain institutions, but probably scaling up that into a real dissemination and back end backward forward linkages that can happen through the education institutes can really then become a reality.
Yes, we understand that the collaborative nature and networking are very the basic thing that would work for such a system. So, a question that arises from this is like how to prepare the community to absorb the technological intervention that any educational institution or any scientific organization is proposing at any level. Like there must be some technological interventions being done at NIRD as well for various rural development causes. So, how do you prepare the community for grasping in the technology that you people must be providing them, and how to measure that the yes that community is ready to absorb it and an implementation stage can be set in. See, one of the in my initial talk, I was telling about this, that you need real demonstrative effect. Like if you really want something to be adopted by the community, you need a hello. Yeah, so, am I audible? Yeah. Yes, sir, you are very much audible. You need a strong demonstrative effect that is created by showing that the technology what you are talking about is working, and it should be as far as possible. If there can be a long term demonstration that people are aware, it's not that one day you go and then show and then pack up and say that, oh look, that day we showed we want to adopt. So I think it depends on the kind of technology that we are talking about. Suppose you are talking about aromatic plant cultivation, probably you have to show the full cycle, and then a few farmers first need to be roped in, and then you have a demonstrative effect. Then people come and see it and then adopt it. So that's how in NIRD we have this rural technology park wherein we have identified some 30, 40 people and technologies that we disseminate through the rural technology park, which are always live. Like the production center has to be running, and then in the production center that we make people train them so that it becomes hands-on. It's not just theoretical, but what they see and what they learn is all live, and I mean, people are able to appreciate. So, and then they followed by the capacity building, like training of 5 days or 10 days, or that goes on, and then post the training, you support them to identify where they can buy the equipment or where it is available. So the handholding that part comes in, and probably if it is large equipments and you need banking support, where they'll get it and financed from which scheme, like if at all, it can it be through KVAC or other agencies. So it starts with an awareness, and awareness and demonstration. That's why it's very important. That's why I keep from our experience, what we feel is, unless you are successfully you're showing something and where they get convinced, nobody is going to adopt a technology that we are talking about. And demonstrative effect has to be there. That's why, as far as possible, if it is localized, and there are, see, just to give you an example, like an aromatic oil an extraction unit can be there in an education institution, which is agriculture college, or an institute which works on biology, which understand plants. It can be even in a science college. They can understand. The teachers just need a small orientation in terms of their knowledge is there, and the only thing is, right now they're only talking about chemistry or biology in their classes, but they just need a small orientation that they know how to extract lemongrass oil from lemongrass, or something which Nayak sir does it a high-end thing in his lab. Like in IIT Delhi, they might be doing a very high-end research, but a basic extraction process, it can be taught by a science teacher, or a professor who is teaching chemistry or in a college. So that's why these nodes and how do we create them is very important. But means I don't think there is no depth of capacity in India. Like we have, like it can be a mission in many places. Aromatic oil cultivator. Unfortunately, farmers are suffering. They don't believe because they are not seeing it. The demonstration effect is
happening in one certain pockets of the country because good agencies like what we have heard the presentation are able to demonstrate. But in a lot more places, the same elephant issue. Like I come from Tamil Nadu, so our area has this big, huge problem of elephant conflicts, and now we are into big problems in the bordering villages in the forest area like foothills of Ooty and other places. So similar issues are happening. The whole crop gets damaged. Banana you cultivate overnight, they come and finish the crop, and they have no other option. So unless these demonstrations can happen in such places, I think this idea of using lemongrass and trying to say that, look, we have avoided this conflict and we are safe, and these kind of effect. I mean, it takes because there is lack of network, this knowledge doesn't go to another place, and it remains within certain pockets, and that's why I feel the agriculture extension is slightly better. I mean, they have the what do you call means. Whether they are using it or not to the fullest level is something that we should ask them. But I feel similarly for other technologies, other sectors, we develop so many things like products for home-based products, or you call it any other thematic area. When you look at domains for like housing, there is huge knowledge that deficit that is there in education institute, and civil engineering department can do quite a lot of things that what they are currently engaged in. They are currently engaged in their basic teaching, but applied knowledge that can be given to a local construction industry or sustainable housing, for example. Like sustainable housing, there is no, except few architectural colleges, nobody talks about it. So there can be this node can take on, like what your question of like how do we actually promote this and prepare the community is basically unless this kind of effect that is created, and then of course now we have this WhatsApp and online mode, certain things can be disseminated, but a coordinated system that is in place at ground level which can disseminate this knowledge and demonstrate it can have much better effect, and then even local issues can be identified. Like I really like the approach of lemongrass for elephant hit area. I think that's a huge they've offsetted the big risk that often happens in these areas, and I think that knowledge, can it go to wide across the country in places where these conflicts are there? So people have to identify these areas, and then certain action plan has to be developed by local agricultural departments or somebody who's working at that level. Then this can happen probably. Then certain farmers can be roped in, and UBA kind of schemes can help in at least the seed, if not the complete package, but at least sourcing certain things that is required, like mushroom cultivation. They have given certain incentive to the farmers where they adopt it. So then it becomes a reality in spreading this technology that is there. Otherwise, it might take several years, or it may not even happen over the years because this knowledge is limited to certain part of the country. So that's what is happening right now. Yes, sir. We totally understand that the trust of the society comes in when the actions of the scientific organizations are so strong to convince them that a particular technology is beneficial to them, and like a strong linking between the two is what is the need of the hour. So, with this thought, we move to our keynote address. Thank you. Yeah, thank you so much, sir, for joining us, and be with us for the rest of the panel discussion as well. Thank you. Yes, sir. And now we invite Padam Shri sir, Sai Damodaran sir from Gramalaya, and he's the founder of the NGO Gramalaya, as discussed earlier in Tiruchirappalli. And this year only he got the Padam Shri award for his distinguished service in the field of social work, especially who has dedicated his life to the sanitation promotion in the villages of southern India. We welcome you, sir. Sir, आप हमें सुन पा रहे हैं? दामोदरन सर?
दामोदरन सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। Nevertheless, let us move to our next panelist, Professor Vivek Kumar from IIT Delhi. Sir, are you there with us on this platform, sir? Vivek, sir? I think Vivek sir is also not there with us on this platform right now. Our team will be contacting them soon. We move towards Dr. Ashwin Deepak Nanavare from CIMSP. Sir, are you there? Since the rest of the panelists are not there, we'll be waiting for them. So we move to Dr. Ananta Vashisht and Mr. Preetam Singh. Dr. Ananta Vashisht is a principal scientist and a nodal officer at Gramin Krishi Mausam Seva Project in Division of Agriculture Physics, ICAR, and as a nodal officer for the GKMS scheme at IARI, the weather-based agreement advisory bulletin are prepared every Tuesday and Friday, and they are disseminated to the end users, especially the farmers and the other stakeholders by the different electronic and print media. A number of programs are organized by her to give awareness among the farmers and the researchers regarding the importance of this agromet advisory and the weather forecast in agriculture, and also the timely and accurate crop management for enhancing the production and income by reducing the farm input cost, that is like following the weather-based management practices, and the timely management of pests and diseases as well. She has developed, calibrated, and validated the statistical and crop simulation models for multi-stage crop yield forecast using the weather indices. She has been invited at different programs by DD Kisan Channel, Khet Kalyan, Mausam Khabar, and Aaj Tak, and also All India Radio. We invite you, ma'am, for your comments, especially while talking to you and the farmers. There was a request that there was a general observation that the weather forecasting details were initially given before this agreement, especially this project initiated. But as Preetam sir also shared with us that he did not, the other farmers as well did not give much importance to the weather forecasting that was done earlier, and there is a special change in the mindset of the people after this particular kind of agromet weather forecasting has been done. So, what are the basic challenges that you see that that was not that has been addressed through this project? Yeah, thank you. Thank you for giving me this opportunity. Actually, in this project, we first is awareness among the farmers. So, what is the importance of this weather forecast? How this weather-based agriculture is improving your? Yeah, I am audible. Yes, ma'am, you are very much audible. So first is that farmers will adopt only those technology once that they accept that okay, this technology is beneficial for them, yes or no. So for this, what we have done, we have selected some villages, first NCR villages, and some progressive farmers, just like Mr. Preetam Singh, he is a progressive farmer. So we adopt these farmers as well as some villages. And then using these farmers, we are sending this advisory as a like that, and we advise these farmers to adopt this technology to their own fields, whether this is giving benefit to them or not. So by seeing these farmers, the other farmers also adopt. They come forward and they also ask that, okay, this technology is giving benefit, just like if a forecast is correct. So what happens? They are saving their irrigation. Just if they want to, based upon this weather forewarning, because this pest and disease that comes only very favorable to the weather phenomena, just like your temperature and humidity.
So we have this, our institute have a several forewarning models for this pest and disease. So based upon, we have a knowledge of past weather, what was the past weather conditions. Also based upon, we are agriculture institute. So in our field also we are raising different crops also. So we know the crop conditions also, which crop is at this times in the fields, what is the stage of the crops. So okay, and what is the future weather forecast that we are receiving from the IMD. And every Tuesday and Friday, medium range forecast also and extended range forecast also. So we are using these all weather phenomena in our models developed by our seniors, our institute, and even ourselves also. And using this model, we are giving the alert to the farmers. Okay, at this time the rice is in your field, so this disease will come and this pest will come in your crops. You just go and monitor your crops. So just like our progressive farmers, they are constantly going and monitoring their crops. And if some symptoms occur, just pluck that leaves or that plants and destroy them, so that this disease will not spread in all the area. So these farmers are doing, so they are getting benefit. One benefit is that disease is not coming, pest is not there, they are not spraying any pesticide. So their quality of their product is also improved. Their market value will improve. Another is if suppose this is spread in their area and they have no other option, only spray option is there. So we are advising them, okay, if this is going above the ETL threshold value, you go for this spray. And based upon your weather conditions, only then you can go for spray. Suppose they go for spray and immediately after rainfall is there, then what will happen? The whole spray will wash out and their cost will go. Their side effect is also there. This pesticide will mix with the rainwater and their soil will also polluted by this pesticide. If rainfall is more, then what will happen? By leaching, this will go to the groundwater. Groundwater will also polluted. If rainfall is so high, intensity is high, then what will happen? This pesticide will go through the rainwater runoff and near about whatever lake is there and pond is there, they will pollute that water also. And what is fish and other animals in that water, they will also pollute. So there are so many side effects are there. So we are giving this advice to the farmer, and farmers now they are adopting. Yeah, okay. Not only their agriculture is affecting, some environment is also polluting, soil is also polluting, groundwater is also polluting, even their lake and other waters is also polluting, and that aquatic animals, they are also polluting because of this problem. Polluting. So only one single information is giving so much saving also, you can say, reduce the pollution also, so many. So these types of what earlier our Dr. Professor Ramesh was also telling, we are adopting this technology, this strong extension system is required. And in ICR systems, we have a benefit for this. We have a extension divisions, we have a KBKs, we are going in the farmers village, we are seeing their problems also. What is the problems farmers are facing? So we based upon their problem, we are taking this problem in our lab and then we are developing some technology. Just like in our IRA, we are developing some wheat variety. So we are going in fields. So okay, this time this disease is coming. Okay, rust disease is coming. So this rust resistant variety we have to develop for the farmers. So first we are going in the field, seeing their problems, and then based upon their problem, these we are developing in our lab. Similarly, other example also, natural resource management is what types of soil is there in farmers' fields, how we can manage this soil health. So different soil health card, using this ICR system, this soil health card is also we are providing. So for innovation and technology, to strengthen this innovation and technology, what is my idea is that first is to improve the extension system or dissemination system. Am I audible? Hello? Hello? हाँ मैम आपको आवाज आ रही है? Okay, okay. So for this dissemination system should be strong, and checking is real time.
Just like for weather forecast, this is the real-time dissemination is required. So for earlier, what 10 years back or 20 years back, this IT is not so strong. So what we are getting the forecast from fax. Through fax we are receiving. And sometimes it is working, sometimes not working. And then we are giving this forecast as well as weather-based advisory to the farmers by speed post or by personal contact like that. So what happens? Suppose forecast for rain is tomorrow. So farmers is getting information day after tomorrow. So again, this is not useless. Useless means whatever advice he is getting, he cannot apply in their field. But nowadays we have a benefits. We have an information technology. This digital technology is advanced. Each and every farmer, or at least in one village, one progressive farmers have a phone, a smartphone. So immediately, whatever weather forecast information we can get, based upon that weather information, we can advise the farmers whatever management he can do in their crops or in their fields. That immediate real-time information that can be passed. And what my suggestion that challenge again here is a challenge. Suppose we pass this information to some farmers, progressive farmers which have a smartphone and this internet facilities. But many of the farmers in remote area, they don't have this facility. So they cannot getting this information in real time. So this is a challenge again. This information should go to the end user, each and every farmers of India. And this will go only when this technology, information technology and others digital technology will reach up to that village. Second is to strengthen this information in innovations and local technology to the farmers. First, we have to adopt the farmers and adopt the village. And we, whatever technology we develop, this technology we apply in their fields, farmers' fields. So whether this technology is beneficial for them or not. If this is beneficial, other farmers, they automatically come forwards and they will adopt this technology. So that you can say this is a chain types process. So if one farmer adopts by seeing this is beneficial, other farmers also adopt this technology. And if one village is adopted, other village they can also adopt this technology. So based upon if this technology is beneficial or not, farmers can adopt. Third is awareness. Sometimes what happens, we have developed so many technologies, so many varieties we have developed, high yielding varieties, disease resistance varieties, drought resistance varieties. These different technology we develop, but farmers, they don't know about the technology. Okay, for this area, for their own village or for their own area, this variety is suitable. For this climatic conditions, this varieties will give high yield quality wise as well as quantity wise. They are not knowing about it. So this awareness is very much required. We are still lacking on this. Although in ICR system, there are different KVKs are there, farmer interaction are there, Kisan Melas are there. We are giving awareness to the farmers during these meetings and these awareness programs. But still, I can say that this should be strengthened. Awareness programs should be strengthened so that each and every farmer should know which technology is beneficial for their own area, which varieties is beneficial for their own area, so that with the less input, they can get more profit for that technology. Again, I can say that in this case, generally in GKMS, what problem we are facing? We are facing some problem in during the monsoon season. During the monsoon season, sometimes what happens, our weather forecast, particularly for rainfalls, we can say this is not 100% accurate. And whatever agromet advisory and whatever management we are doing, that depends upon our accuracy of weather forecast. And why this is happening is because of, I already told in my first lecture also, because of during monsoon season, there is a lot of disturbance in the upper atmosphere, and this weather is very dynamic. So because of that, our weather forecast accuracy is not true. So we have to give again here awareness to the farmer. Okay, 5-6 days before forecast was there, but particularly during this monsoon season, you can see the nowcast, which is more than 95% accurate.
And based upon this nowcast, you can do management in your crops. This is the awareness is required among the farmers. Next is your management. Suppose sometimes what happens, our forecast is also accurate, dissemination is also real time. Farmers don't have a management, that they don't have a technology or some management practices which he or she can apply in their fields. So they have this technology and management also. So we are facing these problems also. Next is adaptability. Adaptability of the farmer. Sometimes what happens, okay, forecast is also accurate, this advisory is also received to the farmers, but they are not adopting this in time. They think, okay, this I will do this tomorrow or day after tomorrow, like that. So again, this awareness should go to the farmers. So whatever technology or whatever weather forecast you are receiving, you have to apply within the times also. So these are the some challenges which we face in the GKMS project also, Gramin Krishi Mosam Seva project. And these challenges we can slowly, and by giving the awareness to the farmers, we can face out these problems. And sometimes what happens, this weather forecast earlier, what was the farmers believe? Because this weather forecast is on the regional basis. 10 years or 15 years back, this forecast was given on the regional basis. And you know that there's a lot of variabilities in rainfall. In some village, rainfall occurs. In some village, rainfall is not occurs. And at that time, forecast was given on regional basis. So obviously, if in my village for rainfall happen, I will say that forecast is accurate. If in other village it is not happen, they will say that rainfall in a forecast is not correct. But at the time pass, this forecast is given on the district level. So when district levels, your forecast is more accurate. So farmers' beliefs is increase on this weather. Now this forecast is given on block basis. So block basis again accuracy is improved. So if your accuracy is improving, it means farmers' belief is also improved. And if they improve, they obviously whatever technology we are saying through the agromet advisory services, they can adopt these technologies in time. So these are some. Yes, ma'am. We understand that many efforts are being done, and mostly they are customized. Customized in the sense that the regional and the block level supervisions are done, and accordingly the agreement advisories are given for the places. One question arises is that Preetham sir also wrote that he wants that such information can be extended to other regions as well, beside Delhi NCR region. So, what are the basically the challenges that would be faced by the government when such type of program is carried out and its circumference is increased? Yeah, this CKMF project is already run in the 130 AMFU, agromet field unit, and also more than 200 DAMU, district agromet field units. So these district field agromet field units are in KBKs, and you can see KBKs comes under ICR, and these are in the districts. So around that district, they are covering. And in AMFU, this AMFU is particularly comes under your ICR institute as well as your state agriculture universities. Just like in my case, I belongs to, I am working in Indian Institute of Agriculture Research, New Delhi. This is again ICR institute. So I am covering the NCR region because forecast is very specific. Whatever forecast is for NCR, that is not valid for Tamil Nadu, that is not okay for Assam. So if I am prepared, and again crop also, India is a very large country and so many crops farmers are raising. So I am covering NCR regions in 150 kilometers, whatever crops farmers are raising in that area and whatever forecast is for that area. So based upon that, I am preparing the bulletins and I am disseminating to the farmer. Just like HAU Hisar. HAU Hisar is there. He is also running same project. He is also getting the forecast, medium range forecast from the IMD. And then for Hisar and other districts for Haryana, he is covering that area.
So likewise, in this GKMS project, we are covering all the crops, whatever farmers are raising for that area, and almost all over the India is covered under this project. So this project is, you can say, a collaborative project between IMD and ICR. And this ICR institute, just like IRS comes under ICR, State Agriculture University, as well as KBKs. KBKs also comes under ICR. Okay, so since it is a collaborative project, so we see such advisories for other districts as well, and like we are happy to mention that people and the society are being integrated through your system as well. So with this, we move to our final panel discussion, and we invite S. Damodaran sir for his keynote lecture. Damodaran sir, if you can hear us. Yeah, yeah. Good evening to Yes, all. yes, sir. Thank Good you so evening, much sir. for such a wonderful opportunity for us to share some of our views on the STI. And in fact, we are majorly, primarily working on, say, water and sanitation NGO. We are operating in South India, covering 7 southern states. And our major areas of operation includes the focus areas are safe drinking water supply, sustainable sanitary latrines technology, then menstrual hygiene plus nutrition aspect. So one of the thing we came to know that the incinerators fitted in the school sanitary complexes are often not working properly. There is a major problem. Though they have been spending a lot of money on the mechanical part and fitting and everything, but after some time it becomes defunct. It is either because of the mechanical failure or some kind of power failure like that. So we have been advocating menstrual hygiene management education in the schools in South India, and we have constructed more than 550 girls-friendly toilet structures. There we have installed manual incinerators. Instead of going for electrical incinerators, we have developed a manual incinerator where they can just throw it into the slot. Then it will go into the other side. They can burn it with a smoke and air pipe fitted in it. So that is a technology we are promoting in the schools. And in the school toilet complexes are primarily having hand washing facilities, privacy and safety and dignity for the adolescent girls during their menstruation period. Like that we are working. The other thing I came to know, one of my friends who I am going to be a mentor for that one is the Save Ma'am. Save Ma'am, who heard about madam? Save Mom. Save Mom is a technology they have introduced, and they are now concentrating mostly on the scheduled tribes, particularly in the hilly regions in South India. A few hilly regions in Tamil Nadu also they field tested. They have given a necklace-like device, and it will be attached to the one of the another device. It will record the pregnant ladies, the pressure and hemoglobin and diabetic informations like that, and also it will give advanced information for the delivery of the child. So such a kind of Save Mom technology is a very wonderful technology now being field tested. Some of the governments they already accepted that one. The World Health Organization also appreciated that effort, and a few youths joined together as a part of startups. Then they started same projects like the CSR, and they are progressing well. That I would like to share before you all. The third one is, though we are advocating for different technologies among the people, particularly it is meant for the beneficiaries actually for whom it should go, the technology. There is a very good technological innovations in the sector. It may be in the form of health or water or sanitation, anything, or skills. The problem is there is a very good proposal guidelines how to implement the project at the field level. Everything goes on very well, but at the field level, unless and until there is a strong CBOs like women self-help groups or a federation of women self-help groups or panchayat level federation are being they should be given orientation.
And if they are given proper orientation, and if there is a good transparency and accountability, and transforming the technological part to the particular intended beneficiaries, then the project will be a successful one. Otherwise, most of the projects will end in failure if that particular technology is not being transformed to the communities at the grassroots level. For example, everyone knows that the importance of rainwater harvesting. The rainwater harvesting technology, the roof water rainwater harvesting for drinking purpose or for recharging the groundwater, it's a very wonderful idea in the water scarce areas, and where there is an annual rainfall also minimal. There people are facing problem of drinking water. There we need to still we need to work on the rainwater harvesting such, and the RWH is meant for drinking also. If it is in a sad place, the overhead, the tank, collection tank is given with proper vent, the first plus and that filtration point, then that will be a great strength for the people. So we need to promote a lot of, and also I came across a lot of efforts are being done in apiculture, the beekeeping. But the beekeeping, very minimal amount is being allocated by the government of India. So the people need a lot of capacity building and technical input on beekeeping, and also marketing aspects, processing the honey they are harvesting from the beehives like that. So we need to spend a lot of time on the technical input part, madam. Yeah. Yes, so we understand that a lot of innovation and solution can be given to the society. One question that we would like to ask you is that being a field implementer, you must Mhm. have faced many challenges in like keeping the people keeping the people according to the technology. Like if you even give the capacity building, even if you give the training, if you even give the awareness, once the main field agency leaves the place, how do you keep the people intact with the technology? Like Yeah. how many, there are many, there are 99% chances that the people leave the technology intervention and they go about the same route that they have been following since years. So, how do you mainstream them into the main system so that they keep on going and adopting the same technology, the new technology? Yeah. So what we are following in our project field interventions is we involve the people, the intended project beneficiaries, right from the project formulation itself, from planning stage, project formulation stage, implementation stage, and monitoring stage, and up to reporting and exit strategy. There is an entry point as well as exit strategy we are following in every of our project interventions. So that in all these phases of project implementation, people, the intended beneficiaries should be involved. Unless and until we should elicit a very good people's participation in terms of consultative as well as contribution as well as community participation. If we involve the beneficiaries and if we clearly give our what we are going to do in that particular intervention, it may be a technology, it may be a welfare scheme, any scheme. We need to ensure transparency in our project implementation, madam. They should know for what purpose, what and for whom the project is being in implementation, and that should be clearly dwelt with the people to whom we are going to work. If we could work with them, and if we involve them in every stages of project implementation, then their participation will be high. And even if you withdraw from the project stage, the people will take as a community ownership of the program. So your this slogan resonates with the Techneev, the tagline of Techneev, that it is a testimony of the scientific empowerment of the community. Like we, unless and until we involve the community into the discussion of how the science and technology should be there for the society, Yeah. get the real benefits out of this community. So, as with this panel discussion, the same message of Techneev resonates in. We conclude the session with the hope that more society
equity and inclusion is seen while implementing the scientific project. And also at that with this session, we come to the end of the 75-hour long marathon that we have been implementing through Techneev. I would request Dr. Techneev from Vigyan Prasar to including remark to this. Long time. Welcome. Yeah, thank you, Tusha. Thank you so much. Good evening, all. We have now, as Tusha has mentioned, we have now come to the end of the program. So, like just to sum it up, but Tusha and you have been listening, at least for today's program, that we started this program during 15th of November 2021. This whole concept to commemorate the 75 years of India's independence. And this was done by the Honorable Minister. The program was launched by Honorable Minister, Dr. Jitendra Singh of Science and Technology. And since then, we have started actually communicating and bringing all the community group members and the change makers and all the experts like whom we have just now interacted in the last session roundtable meet on board. And so we have conducted 25 online sessions, which we call them actually, they are independent sessions, where we try to reach out to three main stakeholders who were covered during these direct interaction. They were 75 community members, 75 change makers who have really brought the change to the society by taking the science and technology intervention to bit among the community groups. More than 75 experts from the field of science and technology and renowned social workers, and majorly Padma awardees, Padma Shri awardees and other Padma awardees were present. Like today we're very honored to have Dr. Damodaran with us. So the program was conducted through online mode. So the benefit of this is that which has really helped us, enabled us to connect with the communities from the far-flung areas of India, like from Leh and Ladakh to Cape Comorin, Rann of Kutch, to inhospitable mountainous terrain of Northeast India, even the borders of Nagaland and India, and in Burma border, mangrove forest of Sundarbans to Thar Desert in West have been touched upon. So this is the uniqueness of this program, that we could bring the people, the community groups and change makers from the remotest location on the online platform, and they all communicated in their regional languages, in their local languages. And so that is the thing. And the whole purpose, as Tusha was mentioning, the whole purpose was to basically understand, to see how much science and technology has percolated down in the communities. What is the Neev? Neev is the foundation. Neev is a Hindi word. How much technology has really created an impact among the communities, and we wanted to capture the testimony of their the success of this or the lessons learned out of these programs. And on the other hand, the scientists and experts also got the opportunity to interact directly with the community members and really got an idea of what are the problems or what are the issues that confront them, and what can be done to scale them up and replicate the local innovations. Further, they also give thought on what modulations can be done in the innovations at scientific institutions so that it caters to the requirements at the grassroots level. So we are very thankful to all these community members, societal change makers, technology developers, technology implementers and experts for their valuable contribution. And at sometimes we have been able to organize on a very short notice. So that has also, we have bothered people on and off, but then everybody was very cordial and very cooperative and supported us in organizing these programs. This relay of 75-hour session that we have conducted today, which is the last day, we conducted under 5 broad themes. One is the natural resource-based livelihood, energy access for prosperous society, healthy society, strengthening the social capital, and integrated community resilience. So here we are happy to mention that we are developing 30 video films on selected stories. Out of 75, we have taken some of the most capturing stories that we are going to cover. We are bringing out 30 video films and a compendium on 75
community group members and their success stories based on the discussion that we had during these 25 days of interaction. And we are likely to bring these things by November 2022. And we will have a kind of a physical program where we would like to invite some of you to witness that physical program, and we will present the outcome of this kind of a study under which we have taken this activity. And during this journey, a physical session was also organized at Uttarakhand, Ramnagar, which is near in the Jim Corbett area, where with the support of WWF India, we have witnessed the improvement in the lives of the people residing in the area. The villages were in the forest area with the help of science and technology interventions, and our heartfelt gratitude to WWF India and the local communities for their support. We are really thankful to all the participants, ministries and departments and coordinators for sharing their content as and when required. And this program, just for the knowledge of yours, I would just like to say, this was a collaborative program of Department of Science and Technology, DBT, Department of Biotechnology, CSIR, and Ministry of Earth Sciences. So this is a whole thing. And Vigyan Prasar, which is an autonomous organization of Department of Science and Technology, we actually are one of the knowledge partners and implementer of this program. So I would like to thank, on behalf of Vigyan Prasar and for this program, Dr. Anuradha Phugat, Senior Scientist from Department of Science and Technology, Dr. Purnima Rupal, and Dr. G. Mahesh from CSIR. They're all senior scientists. Dr. Abhishek Mehta, Senior Scientist from Department of Biotechnology, Dr. Jagveer Singh and Dr. Bhavya Kanya from Ministry of Earth Sciences. And special thanks to Dr. Debapriya Datta, Advisor Seed, Advisor Department of Science and Technology and Head Seed Division, for conceiving this unique idea, as well as mentoring us for carrying out the program. And our sincere thanks to our Secretary, Department of Science and Technology, Dr. Srivari Chandrasekhar, for his guidance and support. And last but not the least, our gratitude to Dr. Nakul Parashar, Director Vigyan Prasar, for his time to guide us and support us. And I will fail if I don't acknowledge the cooperation and the support and my heartfelt gratitude to the team, ISTI Portal at Vigyan Prasar, for hosting the 75 hours of events within a very strict timeline and under many constraints. Thank you. We look forward to your presence again. We may need to communicate or get in touch with some of you for further details while preparing the content and the framework. We'll get back to you on that again, and I'm sure you will all be supporting us the same way. Thank you so much, and thank you, and stay happy and stay blessed, and thank you for your contribution.